Please take their seats. Keep the passage open for the guests to come. Request all the participants and guests to kindly keep the first 4 rows vacant for our international delegates. Yeah, the international delegate has already arrived. Mr. Gagan Malik, the president of Gagan Malik Foundation, is already here, along with all the international delegates. I request all the organizers to make their arrangement in the front row.
I request the organizing members to kindly make the arrangement of all the international delegates in the front rows. Volunteers, please help the delegates to kindly take their seats. All the international delegates are requested to take the front row seats. पार्टिसिपेंट्सला माझं निवेदन आहे की त्यांनी इंटरनॅशनल डेलिगेटसाठी रिकामे करावेत. I request all the delegates to kindly take their seats. I request all the participants to kindly settle down. The sound system manager, थोड़ा वॉल्यूम दीजिए. एक ठेवून द्यायचं. Very soon we will be starting with the program. Today we have within the conference hall a very large number of faculty. नहीं सर, ये सब
Uh, Yeah. Good morning, all of you. Yeah. Yes. Good morning, all of you. Namo Buddhaya, Jai Bhim, Jai Bharat. I welcome you all to the International Conference on Buddhism in Contemporary Times, Relevance of Justice, Liberty, Equality and Fraternity. I, without spending any more time, would like to call upon Mr. Gagan Malik, the Chief Patron of the conference, as well as Dr. Puran Mishram, Patron of the conference, to kindly escort the guests on the dais. Chairperson Dr. Subhash Chaudhary, Honorable Vice Chancellor, Rajasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University. Guest and keynote addresser, Colonel Dr. Pongsak Tangakana. Guest of honors, Dr. Prashant Narnavre, Dr. Danai Chanchoy Chal, Master Michael Lee, Acting Captain Natakit Chaichalar Mongkhon. I also request Mr. Gagan Malik and Dr. Puranchandra Meshram to kindly take their seats. I request Mr. Gagan Malik ji to kindly take his seat. I also request Dr. Puranchandra Meshram to kindly take his seat. Yeah. I request Mr. Prashant Dengre, special invitees, to kindly take the seat on the dais. Mr. Suresh Gaikwad, Mr. Nitin Gajbhiye, Mr. Sanjay Patil, Mr. Nitin Pohne. I request all of them to kindly take their seats on the dais. Other guests are on their way and they will be joining very soon. But in the meantime, without wasting any more time, I guess we should start with the proceedings of the program. I welcome you all once again to this conference. On the occasion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is the celebration of India's 75 years of independence from the British rule, the Dhamma Chakra Pravarta Din, the centenary year of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, which has completed 100 years of its existence since its establishment, and the 75 years of friendship of India and Thailand. This international conference on Buddhism in contemporary times, relevance of justice, liberty, equality and fraternity has been organized by Gagan Malik Foundation, India, in collaboration with International Center for Buddhist Studies, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, College of Social Work, Kamthi, Sanghakaya Foundation, Nagpur, Swargiya Hirabai Bahuddeshya Shikshan Sanstha, Nagpur, Matoshri Anjana Bai Bahuddeshya Mahila Vikas Mandal, Nagpur. I heartily welcome you all on this great confluence of occasions and on this intellectual exchange of ideas. As we are all aware that Buddhism
has influenced not only this subcontinent, but throughout the world, we can see the influence of Buddhism. It has shaped the destinies not only of individuals, but of societies as well as nations. Its influence within the subcontinent has constituted the very firmament of what we call India. And even in modern times, when we see the constitutional India in its modern avatar, we have seen the influence of Buddhism of independent India. Buddhism has always promoted universal values, modern outlook. These values constitute of justice, liberty, equality, and fraternity. They not only guide us in our personal lives, but in the lives of our society as well as our nation. It should also guide us in our relationship with nations throughout the world, between countries throughout the world. So, these principles are the guiding principles of all international relations as we have seen till now. Moving ahead with the program, may I request now all the dignitaries on the dais, including chairman as well as other dignitaries, to kindly garland the statue of Dr. Buddha and offer floral homage and respect to the statue of Tathagat Gautam Buddha. May I request all the dignitaries to kindly proceed towards the statues. The dignitaries will garland the statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar and play floral homage to the statue of Lord Buddha, as well as light the candles. The dignitaries paying their floral tributes and homage to the Lord Buddha. I request all the dignitaries also to kindly light the candle.
Buddha Vandana. Uh, I- Bhadanta Ajaha Prashil Gautam will offer Buddha Vandana to all of us. I request all present in the conference hall to kindly rise for the Buddha Vandana. I request all participants to kindly rise for the Buddha Vandana. Hello. First of all, I just want to welcome all the dignitaries from India and from the world. So this culture to start any event, so we have to take the vision and Manjashila. So the final one, the ideal one, both will give you vision and Manjashila. So we chant together.
कालेन सर्वसम्पत्तिहेतुका प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कर्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्ब्रह्मो लोको भुङ्क्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कर्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्ब्रह्मो लोको भुङ्क्तु सुखी सदा इमाय सङ्घपूजाय कर्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्ब्रह्मो लोको भुङ्क्तु सुखी सदा सर्वपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं उदारशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। Thank you. I thank Vedanta Ajaha Prashil Gautam as well as monks from Thailand for offering the Buddha Vandana. Now I move on to the next phase of the conference. I would now like to request and call upon Mr. Gagan Malik to kindly make a welcome address. Mr. Gagan Malik is the president of Gagan Malik Foundation and is the chief patron of this conference. Mr. Gagan Malik. Dr. Ponsa, Mr. Janai, Mr. Mahasangha, Mr. Vishramji, and all our VIP guests that were here. I give my regards to all of them. And all the Thai people who have come to attend this conference, I give my regards and sincere thanks to all of them. मैं अपनी स्पीच जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा ताकि जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में समझ सके और कुछ लोग जो हमारे अतिथि हैं वो इंग्लिश में बात करूँ तो वो भी समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पूरन मेश्राम जी का और उनकी पूरी टीम का, गगन मलिक फाउंडेशन की पूरी टीम का कि ये इतना अच्छा जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने आयोजित किया। जब भी हम लोग चीज करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहता है कि हम ये क्यों करें। अगर हम इसीलिए ये जा रहे हैं कि हमें एक कॉन्फ्रेंस करनी है कि चलो सबको इकट्ठा करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ से कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और सब लोग वापस घर चले जाएंगे और जो होगा वो सब भूल जाएंगे। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग बहुत पढ़े लिखे, सभी लोग स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे जिसे कहते हैं कि वेरी वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पर हैं, तो उनको आज ये बात हमारे बीच में जो समझ नहीं होगी। There are a lot of people who are here. They are all of them, most of them are intellectual people who are present here, who would like to understand what we are trying to do here. धम्म जो है भगवान बुद्ध का आज अभी ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की जो सेलिब्रेशन है वो चलती है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन दिन था जब रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म किया गया बाबा साहब के द्वारा 1917-14 में। वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हम हर साल मनाते हैं। हर साल मनाते हैं, एक हफ्ते तक चलता है, कई जगह एक महीने तक चलता है। उस
बाद जब वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन खत्म होता है, वो महीना खत्म होता है, उसके बाद सभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एज ए बुद्धिस्ट जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें कंप्लीट बुद्धिस्ट बनाता है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। अब यही हो रहा है। बाबा साहब का एक सपना था बौद्ध में भारत, ये जो भारत है पूरा बौद्ध में भारत है। हम जब भगवान बुद्ध की टीचिंग्स की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हम एनलाइटन इंडिया की बात करते हैं। एक जागृत भारत जो धम्मों को ध्यान से पढ़ेगा, उसे इसका मतलब एक जागृत भारत का जो मतलब है वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस होना, मूर्ति वितरण करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इस काम को लेकर आगे हम बढ़े हैं, लेकिन जितने लोगों से कोशिश बन पड़ती है, वो कोशिश करते हैं कि इनको खींच के नीचे लें ताकि आगे ना बढ़े। आज भारत में 1% बुद्धिज्म है, बाबा साहब को मानने वाले 35%, लेकिन बुद्धिज्म सिर्फ 1%। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम जो है, कोई इंसान आगे बढ़कर कोई धम्म चक्र को बढ़ाने की कोशिश करता है, कि बुद्ध की टीचिंग्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसको सपोर्ट करने की बजाय बहुत सारे लोग हैं जो उसकी ना पूरी कोशिश करते हैं कि खींचे नहीं। आज मैं आप सभी स्कॉलर्स यहाँ पर हैं, उन सभी को ये बताना चाहता हूँ, क्रांति बार बार नहीं आती, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं कि आप वो धर्म चक्र प्रवर्तन करने वाला कोई इंसान आगे इनिशिएटिव लेकर आगे आता है। आज मुझे लगता है कि ये बेसिक्स है मेरे लिए। मैं चाहता तो अपना एक्टिंग करियर को अपना आगे बढ़ाता और अपना जीवन जीना मेरे से, लेकिन ये क्रांति लाना ये बार बार मुमकिन नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल लोग जो हम पर विश्वास करने लगे हैं, आज 60-70 लोग जो डेलीगेशन यहाँ पर आया है, अपने खर्चे से आया, सब कुछ अपने आप किया है। हमने किसी से 1 रुपए की मदद नहीं ली, ना उन्होंने ली, और अपने खर्चे से इसलिए है कि वो हमें सपोर्ट कर सके कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन आई है वो इसीलिए आई है कि हम पूरी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उनकी जो महासंघ है, उनको हमारे साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ के बिना, आप लोगों के विश्वास के बिना ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें ये चीज को समझना होगा कि एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोग हैं, कई बार हम अगर कोई काम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो मेरा मन दुखता है जब मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने लेख लिखे कि ये गलत है, उन्होंने ऐसे लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया। उनके पास कोई काम नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक काम है कि घर पर बैठकर एक लेख लिखना। जब जाओ, लोगों से मिलो, बाहर जाओ, काम करो, उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत आसान है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, आप सभी को पता होगा कि मुझे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया। ये बात बाबा साहब ने कही। अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस वर्ल्ड में, तो मुझे ये समझ में आया जब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे बड़े लोग हमारे बीच में ही जो बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने ये बाबा साहब को कहने पर मजबूर किया कि मुझे आप लोगों ने धोखा दिया। आज एक लेख लिखते कि गलत मलिक ने ये इसलिए एक एक्टर है, बस ये कुछ नहीं कर रहा, ये मूर्तियां बांटने से क्या हो जाएगा, 50 भाइयां मेरे बारे में लिख दी, मेषराम जी के बारे में लिख दी, या किसी तीसरे आदमी के बारे में लिख दी, उनका काम उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर उसको आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो मतलब आप भी उसके हिस्सेदार बन गए। बाबा साहब की बात आती है, बुद्धिज्म की बात आती है, तो बुद्ध तो हमारे सभी के मेरे बाबा साहब, हमारे बुद्ध, हमारा धर्म। लेकिन जब बात ये आती है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं, इतने सारे लोग, 50-60 लोग आए हैं,
यहाँ पर जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो ये क्या खाली गगनवाणी का प्रोग्राम है, या खाली वेशराम का प्रोग्राम है, या जो डेलीगेट्स आए उनका प्रोग्राम है? नहीं, ये सभी बुद्धिस्ट लोगों का प्रोग्राम है। इसको सपोर्ट करना सभी का फर्ज है। मैं दीक्षा भूमि हमारे बहुत बड़े बनते हैं जो भी एयरपोर्ट से लैंड करके यहाँ पर आ रहे हैं, करीबन 70 लाख उनके थाईलैंड में फॉलोअर है। उनको दीक्षा भूमि में लेके जाने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि इनको लेकर जाइए, अगर ये कोई मैसेज देंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा, समाज जुड़ेगा, बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि समाज के प्रकार ये आपको तय करना है कि एक समाज या दूसरा समाज। ये आपको तय करना है कि ये सोचने में कि क्रांति एक बार आती है कि बार बार आती है। क्रांतियां बार बार नहीं आती। जो धम्म चक्र अभी चला है, जो प्रवर्तन दिन हम मना रहे हैं, उसका सही माने में जो मतलब है, हमें सभी को समझना होगा। समझना ही है प्रचार प्रसार। धम्म एक इतनी खूबसूरत चीज है जो सारे धर्मों को जोड़ने का काम करती है। आपको उसका कोई लेना देना कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। धर्म हमें ये सिखाता है कि आप बेहतर इंसान कैसे बने। आज 90% बॉलीवुड बुद्धिज्म बन चुका। बॉलीवुड के किसी भी एक्टर के घर में चले जाओ, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उनके घर में जाओ तो बुद्ध की पेंटिंग या बुद्ध की स्टैचू या बुद्ध का कुछ ना कुछ वहां पड़ा होगा। लेकिन पूछोगे क्या है तो कहेंगे कि सिंपल ऑफ पीस। बाबा साहब के बारे में पूछ लेंगे उससे तो मुझे पता, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी, हाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ना हमारा, इतना मालूम है। तो हम लोग कर क्या रहे, तालाब में, इसी एक छोटे से तालाब में है, एक अच्छा सा लेख लिखते हैं धर्म के बारे में, और जितने बुद्धिस्ट ग्रुप है सब में वायरल कर देते हैं। क्या बुद्ध का धम्म खाली हमारे लोगों के, कुछ लोगों के बीच में ही होना चाहिए कि बाकी सभी में लोगों में जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि बुद्ध का धम्म कहता क्या है। इतना खूबसूरत, इतना प्रैक्टिकल धम्म है। मैं हिंदू परिवार में पला पड़ा, लेकिन मैं भी एक बुद्धिस्ट हुआ। मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे लगता है कि जो उन्होंने बातें कही हैं, अगर उस पर हम चलेंगे तो हम एक बेहतर इंसान जरूर बनेंगे। आप बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर क्रिश्चियन बनेंगे, लेकिन धम्म बुद्ध की जो टीचिंग्स को जब अपने अंदर आप समाएंगे, लेकर आएंगे। आज जस्टिस की बात, इसकी रेलेवेंस है मॉडर्न दुनिया में। आप धर्मों को लेकर आए, आप देखें, आप 5 प्रिसेप्ट जो भगवान बुद्ध ने पंचशील का पाठ कर दिया, लेकिन कितना आसान है। आसान है समझने में, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। अब मॉडर्न वर्ल्ड है, 2600 साल पुराना है, भाई चोरी करना तो बुरी बात है ही है, किसी को मारना तो बुरी बात है ही है, ड्रग्स लेना, इंटॉक्सिकेंट लेना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना, ये बातें तो बुरी है ही है। जो उन्होंने धर्म कह दिया है वो आज से पहले और आने वाले हजारों साल तक उसको कोई बदल नहीं सकता। धर्म में जस्टिस की तरह, धर्म भेदभाव से हमें परे करता। इतनी अच्छी चीजें उसमें लिखी हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है हम इसका जितना प्रचार प्रसार करें उतना ही अच्छा होगा। आज जब मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैं अगर एक जगह पर लेके जाऊं तो मुझे वहां पे नहीं चाहिए 1 करोड़ 50 कमीशन लोग, अरे बाहर के बहुत बड़े बहुत इश्यू आ रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात होगी और लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उनकी हर बात का एक बड़ा मीनिंग, बड़ी स्ट्रगल लगती है। आज बुद्ध मूर्तियां अगर बाहर से लाना आसान काम नहीं है। कहना बहुत आसान है, लेख लिख देना, आगे बुद्ध की मूर्तियां तो जैसे लेकर खड़े हुए कि आइए कब आओगे तो हम मूर्तियां आपको देंगे। वहां उनको समझाना पड़ता है, समझाने के बाद वो आते हैं, उनको मूर्तियां रखेंगे कहाँ, उनका खर्चा कौन देगा, उनको यहाँ तक लाने के लिए लाखों रुपए खर्चा कौन करेगा, कस्टम कौन करेगा, शिपिंग कौन करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर लोगों तक पहुँचाएंगे कैसे, फिर उनको ये एहसास कैसे दिलाएंगे कि देखिए कि आपकी मूर्तियां हमने सारे बिहारों में दी, आपकी मूर्तियां आज हम पूरा अच्छे से वितरण कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, सोचना तो बहुत आसान है कि हाँ ले आए भाई हो गया। एक मिनट एक चीज के लिए इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बैठ कर ये बहुत आसान है, लेकिन काम करना अपना मुश्किल है। आज पूरन जी ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रखा है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो चला है,
वो जो धर्म चक्र चला है, सिर्फ उसको यहाँ पर मना लेना 1 महीना, उसके बारे में चर्चा कर लेना, ये है ना नहीं। उसकी गति कैसे बढ़ेगी, धर्म आगे तक कैसे जाएगा, लोग बुद्धिज्म को और फॉलो कैसे करेंगे, वो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आज कितने सारे लोग हैं जो वैसे बुद्धिस्ट है लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं है। ये आज पर जो बात थी कि बाबा साहब 2 महीने के बाद चले गए, वो रहते तो आज कुछ और होता। और आज आपके मंच पे अपनी स्पीच खत्म करने से पहले ये मेरी स्पीच आपको सोचने में मजबूर करने के लिए मैं कर रहा हूँ कि आपको एक समाज चाहिए या बेहतर समाज, एक समाज चाहिए, कोई दूसरे का साथ देना जरूरी है। मैं अपना पूरा जीवन इसके लिए निछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात सही है। बात यह है कि ये आज इस मंच पे मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज करना चाहता हूँ, ताकि आज आगे रखे उसके लिए हम गगनवाणी फाउंडेशन और जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए काम करें। एक धर्मचक्र परिवर्तन जो पहला रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म किया था वो 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने किया था, जिसमें 5 साल लोग बुद्धिस्ट। अब उनको ट्रिब्यूट देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए ये टारगेट बना के हम चल रहे हैं कि अगले 14 अक्टूबर 2023 में 6 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बनाया जाएगा। ये उनकी ट्रिब्यूट आज के समय ये आप सभी का साथ चाहिए, हमें सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। यहाँ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें जो हैं बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पर हैं जो इस बारे में बात करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मेरे हिसाब से धर्मों में ये सारी चीजें आज अपनी खूबसूरत तरीके से लिखा है। सबको कास्ट कलर क्रीड की तरफ से ना आंका जाए, सब बराबर है, हर तरीके से बराबर है, लेकिन कास्ट कलर क्रीड और रिलीजन इन चीजों को देखें तो सब बराबर है, लेकिन याद रखिए जब ज्ञान की बात आती है तो वहां बड़ा वजन का होता है। हम बाबा साहब के बराबर तो नहीं हो सकते, हम भगवान बुद्ध के बराबर तो नहीं हो सकते, हमारे स्कूल के जो हमारे मास्टर हैं, टीचर हैं, उनके बराबर तो नहीं हो सकते, उनका औहदा तो नहीं ले सकते। आज बड़े बड़े बंदे हमारे साथ हैं, उनके बराबर नहीं हो सकते। ये मतलब कि हमें समझना होगा। इसलिए संघ का आदर करना भी हमारा पहला कर्तव्य है, उसको भी आप सब लोग ध्यान में रखिए। और आप सब लोग आए हैं, इसमें जुड़े हैं, ये धर्मचक्र प्रवर्तन की शुभेच्छा देता हूँ और सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूर्ण मेश्राम जी की पूरी टीम को, गगनवाणी फाउंडेशन की पूरी टीम को, और जो हमारे वीआईपी अतिथि और आप लोग जो यहाँ पर इसका हिस्सा बने हैं उसके बहुत शुक्रिया दिल से करता हूँ। और कोशिश करिएगा कि अगर आप वाकई में चाहते हैं बहुत में भारत के अनटाइटल्ड में भारत, तो एकजुट होकर साथ में चलते हैं, साथ दीजिए और बहुत बहुत Thank you, Mr. Gagan Malik ji, for welcoming the guest to the conference, as well as also a piece of thought where you have appealed to all the Buddhist societies in India to reach out to the larger society as well as work for the unity of the larger society. I thank you once again. Now I will request another organizers as well as patron to this conference, former Registrar of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University and President of College of Social Work, Dr. Puran Chandra Meshram, to kindly deliver the introductory speech. Dr. Puran Chandra Meshram.
teacher, research scholar, enlightened citizen of Nagpur city, as well as those who have come from the various cities all over India and the world to attend the conference. Namo Buddhaya and revolutionary Jai Bhim to all of you. I heartily welcome to all here at the International Conference on very important theme, Buddhism in Contemporary Time, Relevance of Justice, Liberty, Equality and Fraternity, organized by Gagan Malik Foundation in collaboration with International Center for Buddhist Studies of Rashtrasanta Tukurji Mahanusiti, along with the College of Social Work Kampi, Sangakaya Foundation, Swargiya Hirabai Bauddheshriya Shikshan Sanstha and Matoshri Anjanabai Bauddheshriya Mahila Vikas Mandal. It is my great privilege and honor that I am standing before a galaxy of dignitaries from all over the world and India to introduce the theme of the conference. Friends, India is celebrating its 75th year of the independence. Embrace to Buddhism at Nagpur, and Nagpur made impeccable presence on the world map. It is on the occasion of 125th birth anniversary celebration and the commemorate the significance of the Nagpur University took constructive and creative step by the establishing the International Buddhist Center, and this conference is an integral part of it. Under the auspices of 125th birth celebration, our university has contributed its share by establishing world-class Buddhist center at Nagpur. I am delighted to share that the Nagpur University is the only place in the entire India which will provide facility for research and exploration on Buddhism under the one roof, and thus left the significant mark on the cultural history of Nagpur. Friends, the history of India, apart from its various ancient traditions, is known throughout the world as the land of Buddha. The teaching of the Buddha have not only influenced the Indian subcontinent, but the steadily rising all over the globe, where the more and more people of countries in Asia, West Asia, Europe, as well as Africa are now engaging seriously with Buddhist philosophy and way of life. Buddhism is now practiced and followed in more than 70 countries of the world in more or less degree. The Buddhist teaching are almost 2,500 years old, and it are the modern in its outlook that they are the ready guide to contemporary society of the world and nation and the individual. The teaching of Buddha are based upon the sound logic and foundation of the scientific thinking and the universal principle. The principle of liberty, equality, non-discrimination, fraternity, justice, peace are cardinal and intrinsic to the teaching of Lord Buddha. This principle have now become the organizing principle of the most liberal world and democratic around the globe. A free, fair and society seeking for just social, political order cannot ignore this principle, and if they do it their own peril. Society, nation and state which will have shown conservative outlook have promoted illiberal tendencies and inequality, have all seen the rise of totalitarianism and the dictatorial regimes which have eventually led to conflict and threatened peace not only with their own society
and nation, but also the threaten the security and peace of the world. The conceptual framework for all societies of the corporation, independence and the peaceful cohabitation as the global human society within the ecosystem of all living beings and matter. We as Indians are not only proud our rich Buddhist heritage, but also the contribution India can make to world in the realization of this objective. Friends, हमारे मित्र गगन मलिक जी ने यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में आपको प्रबोधित किया। कुछ इश्यूज उन्होंने आपके सामने रखे, उसका उल्लेख मैं करूंगा क्योंकि हमारे कुछ नागपुरियन सिटीजन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको भी कुछ बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस को जब हम लोगों ने शुरू किया और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की, तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो ऐतिहासिक धम्म चक्र परिवर्तन किया, इस देश में धर्मांतर बहुत हुए। जब मुस्लिम मुगल राजा देश में आए तो तलवार के भरोसे के ऊपर इस देश में लोगों का धर्म बदला गया। इस देश में जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो पैसे के आधार के ऊपर भी इस देश में लोगों का धर्म बदला गया। लोगों ने सत्ता के आधार पर, पैसे के आधार पर, लोगों ने तलवार के आधार पर लोगों का धर्म बदला। लेकिन किसी भी तलवार, पैसा, वैभव और सत्ता साथ में न होते हुए हजारों लोगों का दिल परिवर्तन करके अगर किसी आदमी ने लोगों का अगर धर्म बदला होगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इसलिए ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया हुआ जो धर्मांतर है वो ऐतिहासिक ऐसा धर्मांतर है। और आज पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म पूरे विश्व में जो जा रहा है, तो जहां से जो बौद्ध धर्म जो पैदा हुआ, जहां धर्म का जन्म हुआ, उस धर्म को इस देश ने बाबा साहब अम्बेडकर को थैंक्स कहना चाहिए सारे ये पूरे विश्व ने कि इस देश में, जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ था, उस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुद्ध को फिर से खड़ा किया और वो धम्म चक्र प्रवर्तन किया कि जो धम्म चक्र का मतलब होता है कि ये परिवर्तन में धम्म चक्र ऐसा मैं परिवर्तित कर रहा हूं, ऐसा उसको गतिशील कर रहा हूं कि देश की कोई भी ताकत ये धम्म चक्र को रोक नहीं सकती। और आज इसी आकार में आज हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सर, मुझे बताने को बड़ा आनंद हो रहा है यहाँ पर सब लोगों को कि जो डेलीगेट्स की हमारी जो लिस्ट है उसका हमने कल ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है कि यहाँ पर जो मोर देन 1000 डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो डेलीगेट्स में से मोर देन 45% नॉन बुद्धिस्ट डेलीगेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार और भगवान गौतम बुद्ध का विचार अगर लोगों को बताना है, और भारत बौद्ध में करने की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो था, अगर बुद्ध का विचार अगर लोगों को बताना है तो बुद्ध का विचार अगर बौद्धों में अगर सीमित रहेगा, बोलने वाला भी बौद्ध हो और सुनने वाला भी बौद्ध हो, ऐसा अगर कोई आग्रह करेगा तो फिर तुम्हारे बौद्ध बुद्धिज्म की बात, तुम्हारे विचारों की बात ना तो कोई बोल पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। और अगर तुम्हारा बुद्धिज्म कोई नॉन बुद्धिस्ट आदमी अगर नहीं बोलेगा, तुम्हारा बुद्धिज्म अगर कोई नॉन बुद्धिस्ट आदमी सुन नहीं पाएगा, तो बाबा साहब का जो बौद्ध में होने का सपना है वो कैसा पूरा होगा, ये बड़ा सवाल आज आपके सामने खड़ा है। और इसलिए जो लोग इस बात का विरोध करते हैं कि नॉन बुद्धिस्ट माणूस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मध्ये कसा बोलतो, प्रश्न असा येतो की क्या आपने ठेकेदारी ली क्या? कोई भी इज्म, चाहे मार्क्सिज्म हो, गांधीइज्म हो, मनुइज्म हो, समाजवाद हो, हर बात के ऊपर हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्त होने का अधिकार है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात के ऊपर बोलने का सबको अधिकार दिया हुआ है। और इसलिए और कलाम सूत्र ने भी भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी कोई भी थॉट्स के ऊपर अपनी भूमिका रखने की बात की है। इसलिए आप कोई भी थॉट्स के बारे में
जात, धर्म, पंथ को ऐसा रोक नहीं सकते। हर आदमी को इस बात का फ्रीडम है कि वो हर रिलीजन पे बोल सकता है, वो चाहे बौद्ध हो या अबौद्ध हो। और अगर कोई इस बात को रोकता है कि अबौद्ध आदमी बौद्ध कॉन्फ्रेंस में क्यों बोलेगा, तो मैं वो इतिहास को दोहराना चाहूंगा। 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रह्म देश के अंदर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाषण करने बुलाया था। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, लेकिन ब्रह्मदेश के उन लोगों ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गेस्ट करके बुलाया और बुद्धिज्म के ऊपर बाबा साहब को बात करने को कहा। अगर ये हमारे लोगों की मानसिकता अगर ब्रह्मदेश के लोगों में अगर होती तो बाबा साहब अबौद्ध थे, नॉन बुद्धिस्ट थे, तो शायद ब्रह्मदेश के उस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गेस्ट नहीं होते। और बाबा साहब का वो स्पीच जो पूरे विश्व में, जो ब्रह्मदेश में जो बाबा साहब ने स्पीच की, उसकी शुरुआत की वर्ल्ड में बुद्धिज्म फैलाने की। और एक नॉन बुद्धिस्ट आदमी ने उस बुद्धिज्म को वो वर्ल्ड के मैप के ऊपर पहली बार रखा था। बाबा साहब का बुद्धिज्म के ऊपर का वो पहला भाषण दिया तो जो ब्रह्मदेश में हुआ था, और वहां से शुरुआत हुई थी। और इसलिए आप किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी जात के आदमी को, किसी भी पंथ के आदमी को आप बुद्धिज्म को पढ़ना, बुद्धिज्म को बोलना, बुद्धिज्म को सुनने के लिए पाबंदी नहीं कर सकते। और जो ये पाबंदी रखने की अगर बात करेगा तो वो अम्बेडकरवादी और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाला नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने जो 5 लोगों को पहली बार धम्म बताया था, वो क्या बुद्धिस्ट थे? अरे वो तो नॉन बुद्धिस्ट थे। और ये फिर सारा जो भी धर्मांतर हुआ है, जो बड़े पैमाने में धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, वो सारे नॉन बुद्धिस्ट का हुआ है। इसलिए थॉट्स के बारे में, विचारों के बारे में, ज्ञान के बारे में आप किसी भी जात और धर्म की जो पाबंदी या प्रतिबंध है उसको आप अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम कौन थे मानसिकता में पीछे जा रहे, इसका विचार आप लोगों ने रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अपप्रचार किया सोशल मीडिया में, और हमने कहा कि उनको अपप्रचार करने दो। लेकिन आज इस सभागृह के अंदर 1000 से ज्यादा डेलीगेट उपस्थित है। यही उन विरोधियों के अपप्रचार का यही जवाब है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना। और इसलिए जो बात हम कॉन्फ्रेंस के रूप में यहां रखना चाहते थे, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और आज हजारों के तादाद में आज पूरे देश से, विश्व से कम 150 डेलीगेट जो है 5 कंट्री से यहां पर आए हुए हैं। और पूरे हमारे हम लोग डेलीगेट की लिस्ट देखे, वो लिस्ट के अंदर तकरीबन 300 से ज्यादा जो डेलीगेट्स है अलग अलग स्टेट से यहां पर आए हुए। ये काहे के लिए आए हुए? ये बुद्धिज्म को सुनना चाहते, बुद्धिज्म को समझना चाहते। ये 40% से ज्यादा लोग जो नॉन बुद्धिस्ट यहां पर बैठे, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो सुनना चाहते, समझना चाहते। अरे लोग समझने को तैयार है, सुनने को समझ तैयार है। आप क्यों उन लोगों के बीच में ये बौद्ध विचारों के मामले में बाबा साहब के विचार को बताने के बारे में अनटचेबिलिटी आप निर्माण क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है। अगर आप बाबा साहब का थॉट, भगवान गौतम बुद्ध का थॉट अगर आप अपने में ही सीमित रखते हो तो एक थॉट्स के मामले में, विचारों के मामले में आप एक नए अनटचेबिलिटी को जन्म देते हो। आप ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप एक बड़े पैमाने में यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस बनाया। इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक पैटर्न होने के नाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। वो सारे गेस्ट जो यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे चीफ गेस्ट जो है वो अभी फ्लाइट से 11:30 बजे यहाँ पर आने वाले हैं। वो हमारे इनॉग्रेटर रहेंगे, कीनोट एड्रेस रहेंगे, वो आएंगे। उनको हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप लोगों ने हमको सुना। इस कॉन्फ्रेंस में हजारों के तादाद में उपस्थित रह के आपने इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। आज इस कॉन्फ्रेंस में पूरे 6 कंट्री के लोग, 6 कंट्री के मॉन्क्स यहाँ पर आए हुए हैं। और सही मायने में
ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है। Sir, I respectfully welcome Honorable Bharat Vajramethi, who will inaugurate the conference and who happens to be the one of the most revered Buddhist scholar and researcher. Presently, the hold the position of abbot of Chintavan International Meditation Center, Thailand. I request you to सभी लोगों ने यहाँ पर उनका तालियां बजा के यहाँ पर उनका स्वागत करना चाहिए। Our another guest, I welcome and register the august presence of respected Colonel Dr. Pongtang Tankanaji, the President of Giving Mind Nirvana Soul Foundation, Thailand, who will also deliver the keynote address. हमारे सारे जो गेस्ट हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, थाईलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, ये सारे कंट्री के डेलीगेट यहाँ बड़े पैमाने पे आए हैं और पूरे जो स्टेट के लोग जो है अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं और ये भगवान गौतम बुद्ध का विचार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार अपने साथ में लेके जो बात गगन मलिक जी ने की कि आने वाले 14 अक्टूबर को वो 5 लाख लोगों का कन्वर्सन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यही इस प्रकार का मनवंतर होगा। गगन मलिक जिन्होंने जो घोषणा किया कि आने वाले अगले 14 अक्टूबर को हम 5 लाख लोगों का कन्वर्सन करेंगे, हम सभी लोग तय दिल से जो भी नॉन बुद्धिस्ट है वो बुद्ध के विचारों का स्वीकार करके एक बहुत बड़ा धर्मांतर अगले आने वाले 14 अक्टूबर को करने के लिए हम सब लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। ऐसा कहते हुए आप सभी को मैं यहाँ धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। I thank Dr. Puran Chandra Meshram for outlining in brief the scope and importance of the theme and the objective of the conference. Now moving towards one of the most important part of this program, which is also a very heartwarming segment. It is the felicitation of our honorable guest. May I request Mr. Gagan Malik, President Gagan Malik Foundation and Chief Patron of this conference, to kindly felicitate Dr. Subhash Chaudhary, Honorable Vice Chancellor Ashram Tukaroji Maharaj Nagpur University, with a bouquet and a statue of Tathagat Gautam Buddha. I request Dr. Puran Chandra Meshram, former registrar and patron of this conference, to kindly felicitate the chief guest of this program, Venerable Fra Medi Vajirodom.
I request Ms. Smita Vakre to kindly felicitate the keynote speaker of today's program, Colonel Dr. Komsak Tangakana. I request Dr. Rubina Ansari, Principal, College of Social Work and convener of today's conference, to kindly felicitate the guest of honor for today's program, Dr. Prashant Narnavre, with a floral bouquet and the statue of Tathagat Gautam Buddha. Dr. Rubina Ansari will felicitate Dr. Prashant Narnavre. I will request Mr. Nitin Gajbierji to felicitate Venerable Fra Ponchai Pinyapan if he is around. No. Okay, he is not around at the moment. I request Achahan Prashil Gautamji to please felicitate Venerable Fra Maha Arayan. I would like to request Dr. Anil Hirekhan to please felicitate another guest of honor, Prakaru Silakhan Sumuthan, with a floral bouquet and the statue of Tathagat Gautam Buddha. Dr. Anil Hirekhan is the Registrar of Gondwana University. I would now like Dr. Yashwant Patil, Principal, PWS College and convener of this program, to kindly felicitate Dr. Danai Chan Chow Chai with a floral bouquet as well as the statue of Tathagat Gautam Buddha. I request Dr. Rajashri Meshram, Head of the Department of Education Department, Kavi Kulguru, Kalidas University and convener of this program, to kindly felicitate the guest of honor, Ms. Patcharap Paimol, Young Propagate. Dr. Rajashri Meshram. I would request Dr. Vandana Ingle to kindly felicitate Master Michael Lee with a floral bouquet and the statue of Tathagat Gautam Buddha.
Dr. Vandana Ingle will felicitate Master Michael Lee. I request Dr. Neeraj Godi, Head of the Department of International Buddhist Studies Center and convener to this program, to kindly felicitate our guest of honor, Acting Captain Natakit Chai Chala Non Thong. I request Mr. P.S. Khobragade, convener to this conference, to kindly felicitate Dr. Guttichai Borasik. Dr. Guttichai Borasik will be felicitated by Mr. P.S. Khobragade, convener of this program. May I request Dr. Puranchandra Meshram to kindly felicitate the Chief Patron of this conference, Mr. Gagan Malik. I would like to request Mr. Gagan Malik to kindly felicitate the another patron of this conference, Dr. Puranchandra Meshram. So it is mutual. I request Dr. Dharmesh Dhavankar, PRO, Nagpur University, to felicitate Mr. Prashant Dengre. Mr. Prashant Dengre will be felicitated by Dr. Dharmesh Dhavankar, Public Relations Officer of Nagpur University. I request Dr. Manisha Hirakan, convener of this program, to felicitate Mr. Suresh Gaikwad, special invitee to this program. Dr. Manisha Hirakan, convener to this program, will felicitate Mr. Suresh Gaikwad. I request
साला काही समजून येत नाही म्हणजे टाकून दिले जे I request Dr. Om Prakash Chimankar. अरे तिकून टाकणं पहिले I request Dr. Om Prakash Chimankar, Head of the Department of Physics and member of the organizing committee, Rasan Tukolji Maharaj Nagpur University, to felicitate Mr. Nitin Gajbhiye. Mr. Nitin Gajbhiye. आपण डबल वाला आणला लाईनवर आणला इथे स्पीकर कुठे आहे स्पीकर हे I request Dr. Lalita Punaya, member of the organizing committee, to felicitate Mr. Sanjay Patil. Dr. Lalita Punaya आणि फोटोग्राफर will felicitate Mr. Sanjay Patil. हे काही ऐकत नाही मग कोणाला तोंडाला पण त्याचे घेणार आहे का झोप होत हां हलवू का पहिले थांब ना काढू नको काढून I request Dr. Nitin घुमले Dongarwar. काय झालं हां घुमले काय झालं Dr. Nitin Dongarwar will felicitate our special invitee, Mr. Nitin Kohane. Dr. Nitin Dongarwar. चेक कर बरं का पहिले भूक कम प्रॉब्लेम झाला तरी I request Mrs. हॅलो 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 Gajbhiye, Director General of Bharti, is also present here. I would request Dr. Puranchandra Meshramji to kindly felicitate Ms. Dhammajyoti Gajbhiye. एक बार तालियों से इन सभी जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत कर देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नाही ओके ठीक आहे कोणाच्या हाताने करायचं माटेच्या तुझ्या हाताने माटेच्या हाताने काय ना संजय पाटील झालं नाही हे संजय पाटील हां Ravindra Savaitul can also please join in welcoming the international delegate. Ravindra Savaitul. It's such an overwhelming and a heartening sight to welcome all the international delegates to this program. I thank the organizers
for such a warm felicitation and our honorable guests for accepting the same. We now move towards the next stage of the program. I will be calling up our guests to speak few words on this occasion. May I now call upon Venerable Fra Ponchai Pinyapang, the guest of honor for today's program, to kindly deliver his address. He's not here. He's not here at the moment. I now call upon Venerable Fra Maha Arayan to kindly deliver his speech. Maha Arayan? No. Okay. 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 Okay, as the chief. Okay. Okay. Fine. He will speak only. He will speak only. Okay. The chief guest of today's program, Most Venerable Fra Medi Vajirodom, he will be delivering his address. But before delivering his address, it is my duty to introduce him to you. Vudhijaya Vaji Ramedi was appointed as one of the first UNHCR patrons in 2018. इनके इंट्रोडक्शन के बात करें कि इनके इंट्रोडक्शन के नहीं पहले Right. Fra Medivadi Rozom was appointed as one of the first UNHCR patron in 2018, committing to promote peace and compassion towards refugees and humanitarian crisis. The Venerable Fra Medivadi Rodom, a monk, is a scholar, writer, and social worker, had supported the UNHCR since 2016 and has raised funds to provide shelter to 2 million refugees worldwide. The Venerable Fra Medivadi Rodom has dedicated his teachings of applied Buddhism through his lectures, teachings, and books, the most widely known of which is Dhamma with Wings. He has written more than 200 titles, of which many have been translated into various international languages. For his dedication for peace and social development, he was presented with at least 45 titles and awards, including honorary doctoral degrees from 5 universities. We thus have amongst us the most respected and accomplished Buddhist monk, a scholar, writer, and a social activist. I, with utmost respect and honor, call upon you, sir, to kindly deliver the inaugural address and declare the formal inauguration of this conference. Venerable Fra Medivaji Rodom. Đây. ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง May Master Vajramati pay high respect to all venerable here. เจริญพรคุณโยมกากันมาลิกประธานมูลนิธิกากันมาลิก Good afternoon, Kakan Marik, the president of the Kakan Marik Foundations. และก็เจริญพรแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่นั่งอยู่บนเวที And good afternoon, all of you on the stage here. และขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ทุกท่านทุกคน Wish happiness and prosperity to give you all here in this conference. พระอาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมอยู่ในการประชุมครั้งสำคัญที่นี่ I feel very honored that he's like the speaker in this very important conference here.
และอยากจะกล่าวคำขอบคุณคุณโยมกากันมาลิกที่ได้กรุณาเชิญให้พระอาจารย์และคณะจากเมืองไทยมาร่วมอยู่ในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์คราวนี้ I would like to say very thank you to Gagan Marik for invitation that invite Master and Thai people come to join this conference. อาตมาภาพทราบว่าที่อินเดียนั้นคุณโยมกากันมาลิกมีชื่อเสียงมาก I know that in India Gagan Marik is very famous. แต่เมื่อคุณโยมกากันมาลิกไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทย When Gagan Malik he was among in Thailand, he became the famous more in Thailand too. คุณโยมกากันมาลิกได้ทำให้เราชาวไทยหันกลับมามองพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง Gagan Malik make us and Thai people come to see and aware of Buddhism again. เราชาวไทยถามตัวเองว่าทำไมดาราบอลลีวูดคนหนึ่งจึงกลายมาเป็นพระไปได้ I start with the question why a famous Bollywood like Gagan became a monk. ผู้ชายคนนี้ไปพบอะไรที่เป็นเสน่ห์ของพระพุทธศาสนาหรือจากดาราจึงได้กลายมาเป็นพระสงฆ์ What did he find the thing that changed his mind from Bollywood to be a monk? मैं हिंदी में भी थोड़ा सा बता दूंगा, कुछ लोग अगर अच्छे से समझ पाएंगे. वनरेबल ने मुझे थैंक्स किया है और आप सभी को थैंक्स किया है यहाँ पर कि आपने उन्हें इस इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया. वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि गगन यहाँ पर फेमस है काफ़ी और थाईलैंड में भी फेमस है. भिक्षु बनने के बाद 4 महीने के लिए वो थाईलैंड के लोगों के दिल में बसा और ज़्यादा जो है वहाँ पर फेमस हुआ. मेरे मन में उनके मन में उनका कहना है कि ये ख्याल आ रहा था एक बॉलीवुड एक्टर जो एक्टिंग के अपने जीवन में खुश था वो अचानक से बुद्धिज़्म के प्रति इतना ज़्यादा काम कैसे करने लगा और बुद्धिज़्म के प्रति उसका रुझान क्यों हुआ.ตลอดช่วงที่คุณโยมกากันมาลิกบวชเป็นพระทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ชาวพุทธไทยเป็นอย่างมาก While Gagan Malik he was a monk, we have awareness for Thai Buddhists a lot when he was a monk. जब मैं भिक्षु बना तो थाई लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई और काफ़ी ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन मिला कि एक एक्टर जो है वो एक एक्टर से एकदम बौद्ध भिक्षु बन गया. ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเห็นพระและซุปเปอร์สตาร์อยู่ในคนคนเดียวกัน It is not easy that we can see a monk and superstar in one person. ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक अच्छा एक्टर एक सुपरस्टार एक्टर है जो इंटरनेशनल लेवल का उसको एक एक्टर के रूप में और उसी को ही एक भिक्षु के रूप में देखना ये काफ़ी चांस कम ही होता है देखने को मिलता है जो हमें गगन में मिला. พระพุทธศาสนาที่กำลังหลับไหลได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนไทยเห็นดาราบอลลีวูดคนนี้ได้กลายเป็นพระสงฆ์ The Buddhists wake up again when Thai people saw Gagan Malik to be a monk. मुझे ऐसे लग रहा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहा हूँ अपनी बातें सारी कैसे. उनका मानना यह है कि जब गगन एक एक्टर होकर बुद्धिस्ट बना और थाईलैंड के लोगों ने उसे देखा तो जो बुद्धिज़्म जो यंगस्टर्स के बीच में जो थाईलैंड में भी सोया हुआ था उसको जागृत करने में इनका भिक्षु बनना बहुत ज़्यादा साकार हुआ. ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยอดเยี่ยมเพียงใดแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือทูตผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมให้เข้าถึงใจประชาชน We have no question that's why the Buddha teaching is very excellent, but we have no ambassador or the one who promote Buddhism.
इनके मन से, इनके पास हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, धम्म जो है वो इतना अच्छा है और इतना बड़ा है, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अभी तक कोई एक ऐसा वर्ल्ड एम्बेसडर क्यों नहीं हुआ?และพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจอยู่แล้ว ถ้าเรามีธรรมทูตหรือทูตแห่งธรรมที่เปี่ยมด้วยบุคลิกภาพที่ดี ความรู้ที่ดีและจิตใจที่ดีงาม พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปได้ไกลอย่างไร้พรมแดน Buddhism, it is very, very interesting. But if we have good ambassador, handsome ambassador, and clever ambassador, so we can spread Buddhism to be boundless and all around the world. हाँ, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, इतनी सारी बातें वो मेरे बारे में कही जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिज़्म इतना अच्छा है, उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है कि अगर बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने वाला जो एम्बेसडर है वो देखने में बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो काम और आसान हो जाता है।โลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กระแสลมแห่งประชาธิปไตยได้พัดไปทั่วทุกมุมของโลก These are centuries in the world now. We have like the wind of democracy that wind and spread to all around the world too. अभी आज की दुनिया में डेमोक्रेसी है, सब जगह आप किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार बड़ा दिल खोलकर कर सकते हैं और बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार भी उसी तरीके से दिल खोलकर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जहाँ गवर्नमेंट हो, फ्रीडम, ब्रदरहुड एंड द थर्ड वन Equality. इक्वालिटी। ये तीनों चीज़ें, फ्रीडम, भाईचारा और इक्वालिटी, ये तीनों चीज़ें तो बाबा साहब ने हमें ला कर दी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार उनके लिए तालियां बजा दी थी इस बात के लिए। ข้างหน้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก ที่เนื้อหาสาระของประชาธิปไตยทั้ง3คำนั้น มีอยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่โลกนี้จะรู้จักคำว่าประชาธิปไตย It is very amazing and miracle that the main core three characteristics of democracy is already happens in the teaching of the Buddha because before the ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है, ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये तो बहुत अभी आई हैं। सोचो बुद्ध के धम्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2600 साल पहले बुद्ध ने अपने धम्म में ये चीज़ें ऑलरेडी ही लिख डाली और बता डाली। ตอนที่ประชาธิปไตยกำลังก่อตั้งขึ้นมาที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเวลาเดียวกันเช่นนั้นแหละหรือก่อนหน้านั้นแหละหลายร้อยปี พระพุทธองค์สอนแก่นของประชาธิปไตยอยู่แล้วในคณะสงฆ์ของพระองค์ when the democracy was started in Athens in the history, at the same time the democracy was teaching in the period of the Buddha. अब जब भी डेमोक्रेसी आई आने वाले समय में जब हमने देखा है, लेकिन इसका उल्लेख बुद्ध के धम्म में बहुत पहले और बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया था। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में जितनी भी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी लाई है वो फॉलो उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुद्ध के धम्म को ही किया है। พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีเสรีภาพด้วยการประกาศตนให้เป็นอิสระจากการครอบงำของระบบความเชื่อทุกชนิด The Lord Buddha has taught us to make freedom that free from the network of our thoughts and free from belief. ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इनका कहना ये था कि जो बुद्ध का धम्म है वो हमें
फ्रीडम देता है. कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? Yes, the Lord Buddha has taught us to free from all belief. हमें वो फ्रीडम देता है और जितने भी हमारे बिलीफ हैं उन सारों की दिमाग से आज़ादी देता है हर तरह का थॉट रखने के लिए. ये बुद्ध का धम्म है. जो พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตของเราทุกคนอยู่ในมือของเราทุกคนไม่ได้อยู่ในพรหมลิขิตไม่ได้อยู่ในกำมือของเทพเจ้าองค์ใดทั้งสิ้นเราทุกคนนี่แหละกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพ The Buddha taught us our consequence depend on our own actions, don't depend on another things. This we call freedom. बुद्ध कहते हैं कि जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो किसी और के कारण से नहीं मिलता, हमारे खुद के एक्शन से मिलता है, हमारे खुद के कर्मों से मिलता है.ในระบบความเชื่อของทั้งโลกมักจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นถูกกำหนดมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจพิเศษเขียนบทให้กับเราทุกคนแล้วเราต้องเล่นตามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่หรอกชีวิตของเราทุกคนอยู่ที่มันสมองและสองมือของเราต่างหาก In the system of belief around the world, we have the idea that someone already writes our destiny. But the Buddha taught us our destiny depend on our brain and our action. ये कहा गया है कि लोगों की मान्यता है कि हमारी डेस्टिनी तो भगवान ने या कहीं ना कहीं पहले लिखी जा चुकी है. ये कहा गया और ये मान्यता चली, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर आपके हाथों में ही है, आपके कर्मों में है, आपके एक्शन में है, आपके थॉट्स में है, आपके दिमाग में है. ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราทุกคนนี่แหละคือพระเจ้าผู้สร้างสรรค์ชีวิตของตัวเราและโลกของเรา In the shadow of Buddhism, ourselves is the real creator that can create our destiny, our life, and our world by ourselves. कंक्लूसिवली वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी देखते हैं, कई बार हमें आदत हो जाती है कि ये ऐसा हुआ इसका कारण ये है, ये ऐसा हुआ उसका कारण उसके कारण ऐसा हुआ. लेकिन जब आप डीप डाउन जाकर देखेंगे अपनी प्रॉब्लम को तो आपको समझ में आएगा कि ये और कोई नहीं, ये हम खुद ही हैं जिसका कारण ये सारा कुछ किया जा रहा है. तो अपने एक्शंस के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है. ดร.เอ็มเบดกาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะบอกความจริงข้อนี้กับเราทุกคน Dr. Ambedkar, he spent his lifetime that he want to tell us these true things. डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन में समझाने की कोशिश की है. ขอให้เราปรบมือให้กับดร.เอ็มเบดกาด้วย Let us celebrate and clap your hand for Dr. Ambedkar too. ประการต่อมาเรื่องความเสมอภาค The next is about brotherhood. ความเสมอภาค Equality. Sorry. The next is about equality. พระพุทธเจ้าบอกว่าเราทุกคนมีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน The Buddha said about humanities, we have human rights. बुद्ध के धम्म के हिसाब से हम सब बराबर हैं, हमारे सभी के राइट्स जो हैं वो बराबर हैं. ไม่มีใครเป็นคนชั้นสูง หรือไม่มีใครเป็นคนชั้นต่ำเพียงเพราะชาติกำเนิดของเขา No one is high caste or low caste because of his don't importance that where he was born that cannot control or write his caste. बुद्ध के धम्म के हिसाब से कोई हाई कास्ट और कोई लो कास्ट नहीं होती, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी कास्ट या किसी चीज़ के साथ पैदा नहीं होते. जब हम पैदा होते हैं तो एक इंसान की तरह ही, एक बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं. ไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใคร
ทุกคนเท่ากันเพราะเราเป็นคนเหมือนกัน We have the same tear, it is salt, and our blood, it is similar to, it is red. मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, तालियां एक बार बजा दो उनके लिए। उनका कहना है कि हम सभी के जो आंसू हैं वो नमकीन हैं, सबका खून लाल है, वही आंखें हैं, सब कुछ वैसा ही है, तो डिफरेंस किस बात का?เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดความทุกข์และกลัวความตายนี่เป็นสัจธรรมหรือเป็นความต้องการพื้นฐานที่มีอยู่ในเราทุกคนและสิ่งนี้ยืนยันว่าเราทุกคนเป็นคนที่เท่ากัน Everyone need happiness, hate suffering, and fear death. That is mean everyone have the same truth that we are similar. सबको खुशियाँ चाहिए जीवन में और सबके जीवन में दुख भी है, तो अगर आप देखेंगे चाहे वो हाई कास्ट है या लोअर कास्ट है, सबका थॉट प्रोसेस सेम है। कोई बड़ी कास्ट का है, कोई छोटा बड़ा कोई ऐसे सोचता है, तो खुशियाँ तो उसे भी चाहिए, और कोई किसी भी कास्ट का है, दुख तो उसे भी भोगने पड़ेंगे। वन ऑफ द नोबल ट्रूथ ये है। तो इसलिए ऊंच नीच का विषय कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब बराबर हैं। ดังนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเราทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนที่ไม่เท่าเทียมกันเราควรจะตอบเขาว่าคุณน่าจะไปฟังมาผิดๆนะนั่นไม่ใช่ความจริง So if someone told us we have not equal, but maybe we can think he mistake about something because we are the same. अगर हमें कोई कहता है कि हम बराबर नहीं हैं या कुछ ऐसा है, तो वो गलत कहता है। हम हर तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं और इक्वल हैं, और इक्वल ह्यूमन राइट्स हैं हम सभी के पास। และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคของคนทุกคนทั้งโลก This we call equality for all humans in this world. इसे हम इक्वालिटी कहते हैं, जो सबके ऊपर मान्य है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं सबके लिए ये मान्य है कि हम सभी इंसान जो हैं हर तरीके से बराबर हैं। และความเสมอภาคนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องให้เรามาแต่มันเป็นสมบัติที่ติดตัวเรามาทุกคนตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว This equality, it is not the thing that someone have to give me or give us, but it is the right that we have for ourselves when we was born. ये जो इक्वालिटी है ये हमें किसी से मिलती नहीं है, किसी ने हमें देनी नहीं है, ये हमारा राइट है। ये राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्वल होना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ดังนั้นขอให้เราปรบมือให้สมบัติที่สำคัญที่สุดที่เราได้มาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่าความเสมอภาคด้วย Then let's us celebrate and clap your hand for the human rights that we get from everyone when we was born here. Yes. सभी को सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं पता नहीं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरी बातों ट्रांसलेशन की ज़रूरत है या नहीं है? ओके และประเด็นสุดท้ายความเป็นพี่น้องกัน And the last point, we are all brotherhood. और आखिरी पॉइंट जो है ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। ในระบบความเชื่อแต่โบราณอาจจะมีใครมาบอกเราว่าโลกนี้มีคนอยู่มากมายหลายเผ่าพันธุ์และเต็มไปด้วยคนที่แตกต่างกันเต็มไปหมดเลย In the system of belief in the period, someone told us we have different nationals, we have different people, and we have different beliefs. हमें ये कहा गया कि हम
डिफरेंट तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का हमारा बिलीफ है, अलग अलग तरह की हमारी सोच है, ऐसा कहा जाता है। แต่พระพุทธเจ้าบอกเราว่าความแตกต่างที่เราเห็นภายนอกไม่ว่าจะสีผมสีผิวเพศภาษาแม้กระทั่งสัญชาติมันเป็นเปลือกผิวของความเป็นมนุษย์นั่นไม่ใช่สัจธรรม Okay, but the Buddha told us, even though we have different skin, different nation, different languages, but it is just the skin of human. It is not the truth. हम अलग रंग के हैं, अलग नेशनल, अलग देशों के हैं, अलग तरह का हमारा सोच कुछ भी है, लेकिन हैं हम वही हमारी स्किन है, वही सभी की चमड़ी है, रंग चाहे गोरा है या काला है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ว่ามีพวกเราที่ใส่เสื้อผ้าสีแตกต่างกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย In this room, we can see we wear different shirts, many colors too. आज की दुनिया में हम देखते हैं, हम अलग अलग तरह की शर्ट्स पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग रंगों की शर्ट्स पहनते हैं। แต่ในเสื้อผ้านั้นพวกเราไม่ต่างกันเลยพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเหมือนกัน But inside the shirt, we are not different, but we are the same. All we are human. ऊपर से चाहे कैसे भी अलग अलग कपड़े पहने हों, लेकिन अंदर से हम सभी एक तरीके के हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम एक जैसे हैं। इनका जो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, जो मैं भी समझ पा रहा हूँ, हम कुछ भी करें, हम किसी अलग देश के लोग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे रंग अलग हैं, लेकिन हमारे इमोशंस तो वही हैं, वही दो आंखें। दुख तो सभी को होता है, खुशी भी सभी को होती है, तो कहीं ना कहीं हम सभी हर तरीके से बराबर हैं। ये सोच को हमें गहराई से अपने दिमाग में लाना होगा, ये गहरी बात है। ฉะนั้นเวลาเรามองคนที่อยู่ตรงหน้าของเราจงมองทะลุเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่มองทะลุศาสนาที่เขานับถือมองทะลุสีผิวของเขาจนเห็นถึงข้างในนั่นก็คือเห็นคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันกับเราเป็น human beings เหมือนกัน So when we decide or we see the one who sit in front of us, we have to see through the shirt, through the skin, and see the real core inside that we are all human. We are brotherhood. जब हमें किसी को पहचानना हो तो बाहरी दुनिया पे आप मत जाइए उसके शर्ट के रंग से, उसके कपड़ों के रंग से, उसको अंदर से देखिए कि वो एक दूसरे को हमें ऐसे ही देखना है कि हम सभी एक इंसान हैं, एक दूसरे के भाई हैं। ये भाईचारा बढ़ाने के लिए एक थॉट प्रोसेस आपका चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मैंने एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसमें मत सोचिएगा, ये सोचिएगा कि अंदर से मैं भी आप ही की तरह हूँ और आप भी मेरी तरह ही हैं, हम सब भाई हैं। หากกล่าวในเชิงปริมาณโลกนี้มีคนตั้ง 7,000 ล้านคนแต่กล่าวในเชิงคุณภาพพระอาจารย์อยากจะบอกว่าโลกนี้แท้ที่จริงมีคนเพียงคนเดียว If we set in the measure of people in this world, we have 7,000 people, but if we will talk in equality 7,000 เลยนะ 7,000 million people in this world, sorry. But if we said or we talk about equality, ก็มีคนเพียงคนเดียว that if we talk in equality, we all are one. अगर हम बहुत सारे लाखों करोड़ों इस दुनिया में लोग हैं, इस देश में लोग हैं, लेकिन अगर हम समानता के साथ सोचेंगे कि हम सब बराबर हैं, गहराई से ये बात को समझेंगे कि अंदर से हम सभी एक हैं, वही इंसान हैं, वही इमोशन है, तो एक इक्वालिटी की फीलिंग जो है पूरे देश में, पूरे संसार में हो जाएगी और ये जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भेदभाव है, वो सारा खत्म हो जाएगा। ที่อาตมาภาพพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าอาตมาภาพมีเหตุผลดังต่อไปนี้
Why I told you like that? Because I have the reason like this. หนึ่งคนทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน The first, we are all. मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि भाई हैं उसी आबादी में आते हैं तो ये भी एक कारण है हम सब एक हैं और हम सब बराबर हैं สามเราทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันคือรักความสุขเกลียดความทุกข์กลัวตายเหมือนกัน First, we have the same basic need that we all love happiness, hate suffering, and fear of death. हम सब की सोच तो वही है सबको खुशियाँ चाहिए सबके में दुख दर्द है और सबको मृत्यु से डर लगता है ये थॉट तो सभी का ही है तो ये दर्शाता है कि हम सब हर दिमाग से भी हम बराबर हैं สี่เราทุกคนอยู่ในกฎธรรมชาติเดียวกันคือเราเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางและวันหนึ่งเราทุกคนก็จะตายเหมือนกันหมดเลย And the fourth, we are under the law of the nature. That is mean we was born and then we getting old and after that the last time of our life we have to pass away together. ये भी हमें समझना होगा हम एक जैसे हैं क्योंकि हम पैदा हुए हैं बूढ़े होंगे और फाइनली हम सभी को मृत्यु आएगी ये दर्शाता है कि हम बराबर हैं ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาอาตมาภาพจึงบอกว่าแท้ที่จริงคนทุกคนในโลกคือคนคนเดียวกันและดังนั้นเราจึงเป็นพี่น้องกันจึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน By this reason that I told you, so that it mean we all are one. We are one. We are world. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये दर्शाती हैं कि हम सब एक हैं हम सब ये संसार हैं हम सब बराबर हैं ขอให้เราตระหนักรู้ถึงสัจธรรมเหล่านี้เอาไว้เสมอ Let us aware and understand this truth to keep in our mind. ये सच्चाई को हम अपने दिमाग में डालें और इसी राह पर चलें जिसमें हम सबको बराबर समझें और भाईचारा जो है वो आपस में बढ़ाएं ถ้าเราเข้าใจตามที่กล่าวมาเวลาเราทอดตามองไปที่ไหนก็ตามในโลกเราจะไม่เห็นคนที่มีความแตกต่างกับเราเลยเราจะเห็นว่ามีแต่คนที่เหมือนกันกับเราเขากับเราคือคนคนเดียวกัน If we understand like the thing that I said, if we see another people or the people in this world, we cannot see the difference, but we see the same thing that we are one, we are world. अगर आप इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर उसी तरीके से अपने दिमाग में उसे बिठा कर चलेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा हम कोई अलग अलग नहीं हैं हम सब एक हैं ดังนั้นในห้องนี้จึงไม่มีคนไทยจึงไม่มีคนอินเดียจึงไม่มีคนฮินดูจึงไม่มีคนพุทธมีแต่คนที่เป็นพี่น้องกันเท่านั้น So in this room we have no Christian, we have no Thai, we have no Indian, but we are brother, we are family. जैसे अब इस रूम में आज कोई बुद्धिस्ट नहीं क्रिश्चियन नहीं हिंदू नहीं बट अगर देखा जाए तो हम सब इंसान हैं और हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं ในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขอฝากหลักธรรม3ประการนี้เอาไว้ในใจของพวกเราทุกคนที่มาประชุมในห้องนี้และช่วยกันแบ่งปันออกไปให้กว้างไกลที่สุดไม่ใช่แค่ในอินเดียแต่ทั้งโลกเลยทีเดียว In last, I would like to give you three moral that I would like to give it in your mind and take it, practice it, not only you, and spread it to people around the world. मैं अपनी स्पीच में आखिरी में आपको 3 मॉरल देना चाहता हूं जो आप जिसका खुद भी पालन करें और उसे फैलाएं भी และพระอาจารย์ขอฝากให้เราทุกคนเลยในเมืองนาคาปูแห่งนี้จงช่วยกันสร้างศูนย์วัด
หรือศาสนสถานขึ้นมา เพื่อให้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้มีสถานที่สำหรับเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทั่วถึง And I would like to leave the message to all of you here that we can help each other to build the temple, the teaching, the place that we can learn and study Buddhism together. अगर हम सारे एकजुट हो जाएं तो हम बहुत सब कुछ कर सकते हैं, टेंपल भी बना सकते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छा संसार बना सकते हैं. และอาตมาภาพพร้อมกับชาวพุทธไทยยินดีเต็มที่ที่จะช่วยกันสานฝันนี้ให้เป็นจริงในอนาคต And and Master and Thai Buddhists here, we are grateful, and I would like to help you build this thing too. यहाँ पर जितने भी मैं थाई डेलीगेशन और थाईलैंड के जितने भी लोग हैं, मैं पूरा तैयार हूँ आप सबकी हर तरीके से बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए मदद करने के लिए. ในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขออวยพรพวกเราทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ด้วยพรจากพระพุทธองค์เป็นภาษาบาลี At last, I would like to wish you with the merit from the Buddha in Bali language. लास्ट में मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ पाली लैंग्वेज में आपके लिए ब्लेसिंग्स बोलकर. ขอให้ทุกคนประนมมือขึ้น आप सभी लोग हाथ जोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ आज के लिए. อวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเต साधु साधु साधु. बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो उन्होंने धम्मदेशना भी यहाँ पर दी है. उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ अपने साथ आज घर लेकर जाएंगे. और इन्होंने कहा है कि गगन का भी बहुत बहुत थैंक यू, इसने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन किया, उसके लिए बहुत तालियां. थैंक यू. We all have just heard the very enlightening thoughts of the most venerable Fra Madhi Vajirodom, who has reiterated the fact that the principles of liberty, equality and fraternity, which are incorporated even in the Constitution of India, have been the most cardinal principles for organizing societies world over. Dr. Baba Saheb Ambedkar has tried to bring home this fact that these teachings are the teachings of the Buddha and that he is not preaching anything new, and that our modern life should incorporate all these principles in their day-to-day practice. Inequality leads to dukkha. Discrimination leads to dukkha. And therefore, it is one humanity towards which we all must strive. It is a one world. And therefore, I thank the most venerable Fra Madhi Vajirodom for his most enlightening thoughts on Buddhism and the way we should practice Buddhism. I now am breaking the sequence because Dr. Prashant Narnavre, who is one of the guests of honors for today's program, has to go for a very important government meeting. So
Before calling him to deliver his lecture, I would like to introduce him to you. Dr. Prashant Narnavre is an officer of Indian Administrative Service of 2009 batch. Currently, he is working as a Commissioner Social Welfare in the government of Maharashtra. He has a strong inclination for social work and working for the deprived sections of the society. He successfully innovated and implemented several administrative interventions which were not only accepted by the government of Maharashtra but also by other states in India. He enjoys teaching and researching in different areas. In recognition to his academic distinction, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, a world-renowned institute of public policy research and social work, appointed him adjunct professor in the university. While working as collector and district magistrate at Osmanabad and Palghar, he not only conceptualized community corporate as a policy idea, but also implemented it. Thus, we have among us a bureaucrat who is also an academician as well as a social activist, all woven in one. I welcome him to deliver his address. My deep respects to Mahakarunik Tathagat Gautam Buddha and Param Pujya Dr. Babasaheb Ambedkar. Most vulnerable Pera Madhavi Doram, all the distinguished members of Bhikkhu Sangha, and my guest from Thailand, organizer Mr. Gagan Malik, Mr. Puranchand Meshram, chairperson Honorable Dr. Subhash Chaudhary, Mr. Prashant Dere, Suresh Gaikwad, Mr. Nishin Gajbiye, Mr. Anil Hirekhan, my colleague Dijibati Damajoti Gajbiye, all the dignitaries on the dais, and brothers and sisters. First of all, I would like to congratulate Gagan Malik Foundation and Mr. Mishra that such an august gathering is convened. I remember a verse from Milinda Panno where King Milinda says and asks Nagsen, Bante Nagsen, that Bante, what is the reason for any religion to grow or relapse? And he says, Rajan, there are three basic reasons. Bante Nagsen कहते हैं कि राजन तीन कारण होते हैं और इन तीन कारणों से कोई भी धर्म या धम्म या तो आगे बढ़ता है या उसकी प्रगति नहीं होती, लोप पाता है. The first he says that the principles of the dharma were not proper. पहला वो कहते हैं कि कुछ धर्मों का सिद्धांत ही कुछ ऐसा होता है कि वो पालन करने योग्य नहीं होता. Second, he says that those people who propagate that religion are not well educated in that religion. जो वो propagate करते हैं, जो धम्म का प्रचार करते हैं, वो उस religion में उतने strong नहीं होते हैं. And third, he says those who follow do not follow the dhamma properly. जो लोग उस धर्म का पालन करते हैं, अगर वो अच्छे से पालन नहीं करें तो फिर धर्म का लोप होता है. तो मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध के ने जो धम्म दिया, करीबन 1500 वर्ष हम एक इतिहास के पूरे कालखंड को बुद्धिस्ट एरा के नाम से जानते हैं और लगभग 2/3 विश्व 1500 वर्ष तक
इस धम्म का पालन करते रहा तो निश्चित इस धम्म में तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि जिसके फाउंडेशंस वीक हों। फिर दो चीजें जो महत्वपूर्ण है वह है कि धम्म का प्रचार करने वाले लोग, क्या हम स्ट्रांग हैं, और धम्म धारण करने वाले उपासक, क्या हम पूरी शिद्दत के साथ उस धम्म का पालन कर सकते हैं ताकि अन्य लोग आकर्षित हों और वो उस आकर्षण से वे भी धम्म के मार्ग पर चलें। तो मुझे लगता है कि भंते नागसेन ने जो कहा और उसके पश्चात किंग मैनेंदर उन्होंने धम्म ग्रहण किया, उसी प्रकार आज यहाँ भिक्खु संघ और ऑर्गेनाइजर्स ने उसी बात को आगे बढ़ाने के जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि मिलिंद पन्नू का यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस कॉन्फ्रेंस से हम समाज को दे पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आने वाले और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का और ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Prashant Narnavre, sir. Yeah. We are moving now towards the keynote address to today's function. Colonel Dr. Ponsak Tangakana. But before inviting him here, sir, I would like to introduce you to the audience. Colonel Dr. Pongasak Tangakana is currently chairman of Giving Mind Nirvana Soul Foundation. He has been holding many important positions throughout his career. To mention few, he was the chairman of Development of Life and Social Company Limited, deputy president of Velaylak University, Director General of Khai Senanorong Hospital, Director General of Khai Krit Swara Hospital, etc. Dr. Tangakana have held many honorable positions and is the recipient of many awards, including Award for Contribution in Medicine as well as Social Welfare. He has also been engaged in academic writings and has published extensively, including Law of the Universe, 2 volumes on Laughing to Extend Life, again 2 volumes on Conversations with Lord Buddha, and 2 volumes on My Determinations to Come Back to the Nirvana in This Life. His contributions both to public life and academic is immense and speaks for itself. We are fortunate that we have got this opportunity to listen to him. I now invite Colonel Dr. Pongasak Tangakana to kindly deliver his keynote address. Thank you. Lord Buddha, Dr. Ambedkar, most venerable Vacharameti, all Sangha, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm Colonel Dr. Pongasak. I'm very happy to be here and very surprised how very more Buddhist Indian people. This is the first time for me to be here and see many Buddhist temples in India today. Many people would like to know why, Dr. Pongasak, why you become a speaker. I'm graduated from Chiang Mai University as a doctor, and my specialty in facial plastic surgery and ENT. ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं कई बार एक्सेंट ऐसा है, कई बार समझ में नहीं जाता, मैं कहूँ हिंदी में या सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ओके, आई विल ट्रांसलेट, दे विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वेज, इन सम वेज। ये इनका कहना ये है कि
पहले तो ये बहुत खुश हुए कि यहाँ पर आके इतने सारे बुद्धिस्ट लोगों के बीच में आए और बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार इंडिया में इन्होंने देखे। ये भी उन्हीं में से ही एक हैं जो 4 जगहों की जो यात्रा करते हैं, या बोध गया, वाराणसी या लुम्बिनी या कुशीनगर। तो इनको मैं और इनके ग्रुप को वहाँ से हटाकर इनका रूट मैंने चेंज कराया कि आपने वो रूट तो सारा देख लिया, एक बार आकर जो भारत के सही मायने में बड़े जेन्युइन बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के बच्चे, वो भी एक बार आप आके देख लो। तो ये अभी आए हैं, तो वो रूट पकड़ा। ये एक पेशे से एक डॉक्टर थे, एक सर्जन, एक बड़े अच्छे डॉक्टर, और डॉक्टर से एक स्पिरिचुअल स्पीकर बने। वो यात्रा के बारे में आपसे जो इनकी जर्नी है उस बारे में बताएंगे कि क्यों अचानक से एक डॉक्टर से ये एक स्पिरिचुअल स्पीकर बने। Yeah. At that time, you know, I can earn quite a lot of money by surgery, cosmetic surgery. More than 100,000 baht a day. And in one day, I stop surgery at all. Start talking Dhamma from the Buddha, 300 baht an hour. ये एक ऐसे डॉक्टर थे जो एक दिन के 1 लाख बाट यानी कि 2.25 लाख रुपए हर रोज़ के ये कमा रहे थे। एक सर्जरी कर कॉस्मेटिक सर्जरी ये करते थे, जो इंसान को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, नाक वाक सब कुछ। अब मुझे मालूम नहीं इन्होंने अपनी सर्जरी कराई है कि नहीं कराई है। ये काम ये करते थे, और जहाँ ये 2.25 लाख रुपए एक सर्जरी के जो 2 घंटे में ये कमा लेते थे, वहाँ अचानक से एक दिन इन्होंने वो सब कुछ त्याग के 300 बाट प्रति घंटे का की धम्म देशना करनी शुरू कर दी। उसके बारे में अब ये बताएंगे क्या। You know why I changed my profession from facial plastic surgeon to be a speaker, Dhamma? Because of on that about 30 years ago, I'm a director of the hospital. I earn quite a lot of money by surgery. I do real estate and make more money. I have 2 clinics and restaurant, quite a lot, and very good promotion in my position. Many people seem, Dr. Bongsak, you should very happy because of success in many ways. But most of the people in this world don't know how suffering am I. ये लाखों रुपए कमा रहे थे। 30 साल पहले प्रॉपर्टी का काम इतना अच्छा चल रहा है, लाखों रुपए रोज़ के आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक से सभी चीज़ों का त्याग कर धम्म देशना शुरू कर दी 600 रुपये प्रति घंटा पे। तो लोगों ने आके इनको कहा, आपका जीवन इतना सुखमय है, लाखों रुपए आप कमा रहे हैं, ये जिसके लिए लोग एक सपना देखते हैं कि ऐसी लाइफ हो, इतना सब कुछ हो, इतना पैसा आपके पास आ रहा है, तो आपने छोड़कर धम्म देशना 600 रुपये में क्यों करनी शुरू कर दी। तो ये कहते वो इसलिए ऐसा सोच रहे थे, उनको सिर्फ ये देख रहा था मैं पैसा इतना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से कितना खुश हूँ या कितना दुखी हूँ, ये वो लोग नहीं जानते थे। You know why I suffer? इतना कुछ पैसा ये वो, लेकिन फिर भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे दुख है। ये आप मेरी शक्ल देखकर, मेरा बाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना दुखी था। So I don't want jealous anyone in the world who richer than me, who are bigger than me, and have more the property than me. Because of all the things cannot me happiness at all. मैं कभी भी किसी के पास ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा फेम है या ज़्यादा और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो देखकर मैं कभी भी जला नहीं। किसी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितना भी पैसा है, कितना भी बड़ा ओहदा है, उसका ओहदा, उसका पैसा मेरे दुखों को कम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कभी इस चीज़ की जलन नहीं की। Yeah. I listened one monk only half an hour in the hotel. At that time, I feel that I carry 2-3 mountains in my head. इन्होंने एक दिन आधे घंटे के लिए एक भंते को धम्मा देशना देते हुए सुना, और उसी दिन इनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं इतने दुख में हूँ, उसका कारण यह है कि मेरे सिर पर जो है कम से कम 2-3 पहाड़ लेके मैं अपने सर पर चल रहा हूँ अपनी जीवन में। After I listened one monk
in the southern part of Thailand. My life changed. All the mountain in my head disappear by the teaching, Buddha teaching word, only half an hour. उस आधे घंटे की धम्म टीचिंग्स, बुद्ध की टीचिंग्स ने मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है बदल दिया और मेरे सर पर जो एक पहाड़ लेकर मैं चल रहा था दुखों का, वो तुरंत वहां से हट गया. Yeah. So only half an hour, my life changed. I feel that I enlightenment at that time. Suddenly. उस आधे घंटे में इनको ऐसे लगा कि भाई मैं एनलाइटेंड ही हो गया हूँ. इस लेवल तक इनको उसका असर जो है उस धम्म देशना का पड़ा उस दिन. But I think all of you बहुत ज्यादा और इंटेलिजेंट और क्लेवर है. You know why I changed? Because of after I think Buddha teaching is valuable, very good. You know how much money that I make a value of the Buddha teaching. Until now, all of the bank in India give to me instead of the Dhamma that I have learned. No, nothing. Cannot comparable. मैंने जीवन में जितना भी पैसा कमाया, लेकिन जो धम्म देशना देकर जो मुझे खुशी मिलती है, पैसे से मैं उसकी बराबरी कहीं नहीं कर सकता. इंडिया में जितने बैंक हैं वो कितना भी पैसा मुझे दे दें या कुछ भी कर दें, लेकिन वो खुशी मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती जो मुझे धम्म देशना करने में जो खुशी प्राप्त होती है, जो बुद्धा की टीचिंग मुझे लोगों के साथ शेयर करने में मिलती है. You know why? Because although the richest man in the world still suffering, the rich man in the world may got cancer or many disease. ये ना खुशी, कई बार हम समझते हैं कि ये बहुत पैसे वाला है, इसको क्या दुख है, तो पैसा ही पैसा इसके पास, लेकिन ऐसा नहीं है. ये कह रहे बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो कैंसर से पीड़ित हैं. उस पैसे का क्या करेंगे वो? But now I'm happy all the time, and I feel that I'm no more any cancer in my life, and I will live long. I expect my life 150 years. मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मुझे क्योंकि मुझे मालूम है और कुछ नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे किसी तरह का कोई कैंसर नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. So please wait for me to speak for the next 70 years. अभी 70 साल और है मेरे पास बोलने के लिए. So today is the most important word in this situation. Buddhism in contemporary times, relevance of justice, liberty, equality, and fraternity. These are three key words to change the world. The first one, justice. The man is world think justice, he just on the right way. But for me, it's outside, not inside justice. For example, if you have one cake and 4 people, now you have to separate this cake for 4 people. The human is this world cut equally by weight or by some things to equally and give the people this was called this justice. But in Buddhism, we not say like that. We have to go in deep. For example, the first one come from the party, wedding party, take a lot of food until here. Another one go to the party or friend party, also take so many food like this. Another one didn't eat anything for 3-4 days, very, very hungry. So injustice to give the cake to the 4 people, you think you separate unequally or you take the bigger one to the 4th one. So in religious, we should give the cake to the 4th one. This is justice in Dhamma. इंग्लिश समझने में भी थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है इनके एक्सेंट की वजह से.
इन्होंने कहा है कि भाई जस्टिस जो है वो विद इन होना चाहिए, डीप डाउन अंदर होना चाहिए। कई बार हम समझते हैं ओके ये एक बड़ा सा एक पिंजरा है या एक जगह है कि उसमें 4 लोग हैं तो सबको एक बराबर बराबर कमरा दे दिया जाए कि सबका बराबर आ जाए। ठीक है कि ये जनरल जस्टिस है, लेकिन यहाँ हम स्ट्रॉन्ग इनर जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमें वो पहचानना होगा कि जैसे अगर एक आदमी पार्टी करके आया है तो उसका पूरा ऊपर से अच्छा वो भरा हुआ है उसका पेट ऊपर तक, दूसरे ने भी बहुत कुछ खाया हुआ है उसका भी पेट भरा हुआ है, तो तीसरे का कम भरा है और चौथे ने कुछ खाया ही नहीं है। तो अब एक केक आपके पास आया है तो आप बोलोगे अच्छा मेरे पास केक आया है तो मैं काम करता हूँ 4 को बराबर दे देता हूँ, लेकिन पहले 2-3 को तो उतनी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्टिस उस समय ये कहता है कि भाई वो जो केक है जिसने कम खाया हुआ है उसको उस हिसाब से दिया जाए, जो पूरा जिसका पेट खाली है उसे उस हिसाब से वो खाना दे दिया जाए, ताकि 4 लोग जो हैं वो संतुष्ट हो जाए। वो दिमाग वाला जस्टिस है जो आपको डीप डाउन अंदर से सोचना है। ये जस्टिस का डिफरेंस है। Another word, equality. Equality is not a physical equality because of impossible. Example, one company, there is only CEO, no worker. How the company is run? There is only CEO. That is not true. Or if the army, there is only general, no colonel, no major, no sergeant at arms. How the army run? So in different length, make the same equally, but inside, not outside. Inside equally. You know, the most of the people thought that the more money, the more happiness. So try to compete to make more and more money. But you know, in the research of the famous university, he tried to, this one is happy, this one is money. When more money, more happiness, more money, more happiness. And when turn this point, more money, less happiness, more money, less happiness, until more money but suffering. In this world, in this point, more money but more suffering. Because they beyond this point. This point is equally point. What is equally point mean? Mean that everyone in this world, the heaven give you equally in everyone in this world, up to that person to spend their life suitable for his situation or not. If the farmer spend their life suitable for farmer, that farmer can be happy. And the layman on the roadside spend their life is suitable for his life. He can be happy. So everyone in this world can happy as the same equally. यहाँ इक्वालिटी का मतलब ये अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं जो मैं समझा हूँ। इनका मानना है जब बाहरी दुनिया में इक्वालिटी की बात करेंगे तो आपको ये सोचना होगा, एक कंपनी है, कंपनी में सीईओ तो एक ही होगा ना। अब इस सभी ये कह रहे हैं कि मैं भी, ये भी सीईओ तो वर्कर कहाँ से आएंगे? अब वर्कर और सीईओ की पोस्ट तो अलग अलग है। वो कोई नीचे काम कर रहा है, कोई ऊपर काम कर रहा है, वो तभी कंपनी बनती है। आर्मी में जाएंगे, अगर सभी को जनरल बना दिया तो आर्मी कैसे चलेगी? तो ये इनका मानना ये है, बाहरी इक्वालिटी को नहीं देखना, हमें जो अंदर की इक्वालिटी है वो उसे हमें देखना है। कई बार हम ये समझते हैं कि जितना पैसा कमाते जाएंगे उतने हम खुश होते जाएंगे, सब कुछ बड़ा होता जाएगा, हम भी बड़े होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने कहा है कि जितना पैसा बढ़ता जाएगा उनका उतना दुख आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। ये पक्का, ये रिसर्च की हुई बात है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे एक किसान है, वो थोड़ा सा कमाता है लेकिन शाम को बहुत खुश है, आराम से अपना पेट पालता है और सो जाता है। या कोई एक ऐसा लेबर है जो जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपने जीवन में खुश है, उतना पैसा कमाता है कि अपना घर चला लेता है, अपने जीवन में खुश है। जब वो चीज़ को आप सोचते हैं, वो अंदरूनी इक्वालिटी है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हैप्पीनेस लेके आती है। ये उन्होंने अभी बात को ऐसे समझाया। The last word, it means fraternity or
peaceful or brotherhood. If anyone in the world know that before the past life can reincarnation, you will know that we are here is a brotherhood because of I do past life for many patients. This is my book. Someone who was born very rich in India, Lachin, but next life is very, very, very poor Chinese man. Because of when he was a very rich man in India, cheating the people, give the money, very few money to the worker. ये So कहते हैं next slide, कि yeah. पास्ट लाइफ रिकर्शंस भी करते हैं। ये डॉक्टर हैं जो आपको पिछले जीवन के बारे में बता सकते हैं जब आप इनके साथ बैठते हैं, ये भी ये काम करते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहीं देखा कि एक आदमी जो भारत में बहुत अमीर पैदा हुआ, अचानक से बहुत अमीर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इस जन्म में जब वो उनसे मिला तो एक बहुत ही गरीब चाइना में पैदा हुआ और बहुत ही गरीब, बड़ा ही लेबर करता हुआ, ज़्यादा मजदूरी करता हुआ जो है वो ऐसा पैदा हुआ बड़े सारे दुखों के साथ। तो इन्होंने स्टडी किया तो उनको मालूम चला कि ये डिफरेंस इसलिए आया, जब उसके पास पैसा था तो उन्होंने सभी को चीट किया, जितना धोखा दे सकता था लोगों को दिया, और जो उसके कर्म जो हैं वो कंटिन्यूटी में चलते हैं और अगले जन्म में वो एक जो है गरीब चाइनीज के तौर पर पैदा हुआ। Buddhism can make this world peaceful. Everyone in this world walk in the opposite way of the Buddha. Try to have more rank, more money, something like that. Although the Buddha act not to let the people know that life, that be happy. They're happy more than Asoka. बेसिकली उनका मानना ये है कि भाई पैसा जो है वो सारी खुशी नहीं देता, बुद्ध का धम्मा शांति देता है। इसका बहुत सबसे बड़ा उदाहरण भगवान बुद्ध स्वयं हैं, जो एक प्रिंस थे और जिन्होंने सभी चीज़ों का त्याग किया, त्याग करके सिर्फ रोब में थे, चिवर में थे, वो भी 3 कपड़ों में, और उनसे ज़्यादा पीसफुल, सुखमय, शांतिपूर्वक आज तक कोई इंसान नहीं हुआ। How to propagate Buddhism in India? The first, Gagan would like to give the Buddha statue 84,000 to the Indian people. The second one, to give Dhamma. Vacharameti said that we have to give the Dhamma to the Indian people. And the third one, Sangha. We have to create monk, Indian monk. Let the people in India, maybe retired people, to become a monk. And send them to the Vacharameti temple to train meditation for 1 month to 3 months. And after finish clean the mind already, I would like to teach spiritual medicine. Spiritual medicine is a message of the Buddha. Treat untreatable disease in this world. For example, diabetes. If anyone was diagnosed is a diabetes, it means that you have to take a medicine every day until die. By 5 minutes, uncontrollable blood pressure. Maybe you take medicine for years, cannot stop down. But if you use spiritual medicine, can cure within 5 minutes. And very luckily for you, this time I bring spiritual doctor from Thailand to serve you 6 doctor. Please stand up, please. मैं बताता हूँ, इनका कहना है कि गगन जो है उसने कहा कि मैं बुद्ध को घर घर पहुँचाऊँगा। वेनेबल वचिरामेथी ने कहा कि हमें सबको धम्म घर घर पहुँचाना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि हमें और सारे भिक्षु का जो हैं उनकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा इनका कहना यह है कि ये आज यहाँ पर आए हैं
इनके साथ 6 स्पिरिचुअल डॉक्टर साथ में आए हैं, जैसे जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और भी किसी तरह की बीमारी है, जिसे वो स्पिरिचुअल हीलिंग से एक ही दिन में ठीक रखने की ताकत रखते हैं। वो आज हमारे साथ हैं और मैं पूरन मेश्राम जी से ये कहूँगा, ये 6 डॉक्टर हैं और मैं पूरन मेश्राम जी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस 5 बजे तक आई थिंक ज़्यादातर चलेगी। 5 बजे के बाद हमें 1 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाए, ताकि जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, वो यहाँ पर आएँ और ये जो 6 डॉक्टर हैं 5-5 मिनट के अंदर जो जो उनकी हीलिंग कर सकें वो कर पाएंगे। तो ये मौका, जो भी पेशेंट आपके जानकार हैं, आप 5 बजे यहाँ पर इसी हॉल में सबके सामने ये हीलिंग करेंगे, आप लेकर आ सकते हैं। एक बार तालियों से स्वागत कर दें 6 डॉक्टर्स का। Yeah. Don't believe me, but you have to try by yourself, to prove by yourself. If you got a backache, leg ache, knee, neck, any in your body, you can try this evening after finish the conference. वो कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये इलाज करेंगे, किसी के सर में दर्द है, किसी के बैक में दर्द रहता है, किसी के नी में, किसी की कमर में, तो ये आज कॉन्फ्रेंस के बाद आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि एक ही हीलिंग के बाद आपका वो दर्द ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स वो काम करते हैं। Very special, because of free of charge. वो कह रहे हैं बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये इलाज फ्री में किया जाएगा। तालियां। Because you are Buddhism, so you free of charge for today. क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिस्ट हैं और ऐसी बात नहीं है, इलाज सभी के लिए है, हम सब बराबर हैं, इक्वालिटी की भी बात हो रही है। ये आज जो है ये इलाज, लेकिन ये जो भी करेंगे, जिसका भी करेंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। प्लीज़ आपके घर में भी जो भी हो, आप लाना चाहें तो एक बार आप लाकर ये ट्राई कर सकते हैं। 5 मिनट में कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए। Yeah. One thing, the most important things when you propagate Buddhism in India, please don't compare Buddhism to the other religions. Cannot compare. Now, if you want to make a Buddhism is a bigger, not compared with the other religion. Because why? Uncomparable. For example, today if I talk that, Gagan Malik, I can talk more amusing than you. Maybe Gagan Malik said, Dr. Bangsak, although you talk more amusing than me, but I have more hair than you. But if Gagan Malik said it, Dr. Bangsak, I have more hair than you, I will ask you that, Gagan, although you have more hair than me, but I spend less shampoo than you. Cannot comparable. Buddhism is suitable for Buddhists. Christianity is suitable for Christian. Hinduism is suitable for Hindu. Not comparable. Please, not comparable to any religious. उनको कहा है कि भाई बुद्धिज्म, जो भी बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध का जो धम्म है, इसको आप कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सबका एक अपना मान्यता है, सबका आदर सम्मान है, हर रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई पैदा होती है और कुछ नहीं होता। और उसके एग्जाम्पल इन्होंने दे ही दिए हैं कि अगर मैं गगन को बोलूँ कि भाई क्या कहते हैं, मैं तेरे से ज़्यादा स्मार्ट हूँ या ऐसा है, तो मैं उनको बोलूँगा कि मेरे सर पर तुम्हारे से ज़्यादा बाल हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है, तुम्हारे ज़्यादा बाल है, तो मैं कम शैम्पू यूज़ करता हूँ, तुम्हारा शैम्पू ज़्यादा लगता है। तो इस तरह का वाद विवाद होता है। इसलिए कोई भी रिलीजन को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। जो धम्म कहता है, जो आपको बेहतर इंसान बनाता है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। You can imagine that if you have about 1,000 monk or 10,000 monk, Indian monk, go to the Vajrameti temple and train meditation for 3 months, clean and train about the spiritual doctor from me and my staff for about 7 days, finish already. Very easy and very effective. Okay. And after that, let the monk learn to be a speaker for me.
for 2-3 days. After that, you mean every temple in India full of the people, not only Buddhists, any religions come to treat, to make a hypnosis, to do past life, and to treat about the suffering of the body. ये आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि आज ये स्पिरिचुअल जो डॉक्टर्स हमारे साथ आए हैं, ये हमारा बहुत हम भाग्यशाली हैं कि जो लोग आए हैं। और आप 5 बजे प्लीज़ किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ़ तो है ही है, तो आप 5 बजे अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप ज़रूर आइएगा। और ये जो है कुछ अपनी टीचिंग्स जो हैं, जो हमारे भिक्षु हैं उनके साथ भी एक शेयर कर लेंगे, ताकि ये भी जगह जगह जाकर जो लोग बीमार हैं या कुछ किसी को प्रॉब्लम है वो भी हील कर सकें। Yeah. All of my talking finished, yeah. Just only starting, but we have no time today. So I take my book, Past Life Regression for Happiness, 100 Life, 100 Secret. This one, and this one is Law of the Universe. The last chapter, how to make this world peaceful. You can take it. This is one is conversation with Buddha. Actually, I have been talk with Buddha for many more than 700 hours. But today I have no time to talk. Next time, if he has the time and you have the time, maybe I can talk to you about 3 days, 4 days, something about it. ये इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स है जिसमें आपको शांतिपूर्वक कैसे रहना वो है। पास्ट लाइफ रिकर्शंस हैं कि इस जन्म में जो आप चीज़ें भुगत रहे हैं वो एक बार स्टडी करने के बारे में कि क्या ऐसा है कि आप इस जन्म में ऐसे हैं, उसके बारे में है। और विच इज़ द थर्ड वन, विच इज़ द लास्ट वन? कन्वर्सेशन विद बुद्धा, बुद्धा के साथ बातचीत। ये किताब में क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार मेरे पास ज़्यादा समय मैं नहीं बोल सकता कि और भी स्पीकर्स हैं, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि जब आपके पास अच्छा समय हो, मेरे पास अच्छा समय हो, मैं फिर आऊँगा और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के दुख कम हो सकें। और ये मत भूलिएगा 5 बजे जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो जो भी कुछ पीड़ित लोग हैं वो प्लीज़ आइए, ये 6 डॉक्टर्स को मौका दीजिए कि आपको वो अच्छे से हील कर सकें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Give to everyone who like to read. Don't read, don't take, please. Not only read the person who want to read it, take. After finish the conference, I will be अगर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो वाकई में ये किताबें पढ़ना चाहता है तो वो ले लेगा। जिसको नहीं पढ़नी है वो प्लीज़ मत लेना, लेकिन जिसको पढ़नी है वो ज़रूर मेरे से इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये किताब ले सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पोंगसाक का बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल बैक टू द MC नाउ। Thank you, Colonel Dr. Ponsak Tangkana, for enlightening us with all the deeper understanding of those concepts of the conference. We have 2 more speakers to go before the chairman's speech. Young Papracon to kindly give her address in brief and enlighten us. You want to come again? ये थाईलैंड का तरीका, एक बारी कुछ भी शुरुआत करने से पहले भगवान बुद्ध को जो है एक बार रेस्पेक्ट पे करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थाईलैंड से आए हैं, इनका हेयर स्टाइल सब कुछ कह रहा है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नमस्ते। Most venerable and all my dear friends, I am very excited to talk here.
Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. India is the most sacred place in the world because it is the land of Buddhism and the birthplace of the Buddha. मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि इंडिया इस वर्ल्ड में सबसे पवित्र जगह है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे. Every Buddha must born in India. He is a child of India, same as Mr. Gagan Malik and all of you. भगवान बुद्ध जो हैं भारत के बेटे थे जैसे गगन है और जैसे आप सभी हैं. Buddhism used to be the religion of this nation, especially in the reign of King Asoka the Great. Unfortunately, it has gradually lost its place in India and instead flourished in Thailand and in some other countries. भगवान बुद्ध जो है भारत के बेटे थे लेकिन उनका जो धम्म है वो बहुत सारे थाईलैंड जैसे अलग देशों में उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है. I have learned that Mr. Gagan Malik has a strong determination to bring Buddhism back to India. मैंने ये रियलाइज़ किया है कि गगन की डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भारत में जो है रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म करने के लिए. He needs encouragement and support from all of us. गगन को हमारी तरफ से पूरे थाईलैंड की तरफ से जिसे कहते हैं तन मन धन या दिल और जान से हम उसको सपोर्ट करते हैं बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए भारत में. As a Thai Buddhist, I am honored and happy to help and support him to accomplish his mission wholeheartedly. एज अ थाई बुद्धिस्ट मैं क्या कहते हैं ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं गगन को सपोर्ट करती हूँ ताकि उसका मिशन जो है अच्छे से कंप्लीट हो सके. And I really do hope all of you would do the same. और ये मैं आपको भी कहती हूँ कि मैं आप सबके भी साथ हूँ अगर जहाँ बुद्धिज़्म की बात आएगी बढ़ाने की. Yes. Thank you very much, my dear friends. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर से आपका शुक्रिया करती हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, ma'am. There's another important speaker who would like to go, Dr. Danai Chan Chao Chai. Gagan wants you to speak. Namaste กราบสวัสดีครับถวายความเคารพพระอาจารย์ว.วชรเมธี and most venerable and all the Buddhist fellows in this room. Anyone here is hungry? Please raise your hand. Anyone hungry? Raise your hand. Okay, so I will be very, very quick. According to the theme of this, the theme of achieving liberty, equality, and fraternity. So I would like to ask everyone in this room, is anyone would like to have freedom? Raise your hand. मैं आज के टॉपिक है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको अपने जीवन में हमेशा आज़ादी चाहिए? अपना हाथ खड़ा करिए. Okay, thank you very much. Thank you. Anyone would like the world to be equal? Raise your hand. जो ये चाहते हैं पूरा संसार बराबर हो, इक्वालिटी हो, वो भी हाथ खड़ा करें. जो ये चाहते हैं संसार में. Thank you very much. Anyone agree with Prajaan Vajrameti earlier speech that we all are equal as one human being? Raise your hand. क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं जो वेनरेबल वज्रामेथी जी ने कहा कि हम सब के सब ह्यूमन हैं और सब के सब बराबर हैं? इस पे विश्वास करते हैं तो हाथ उठाए दीजिए. Thank you very much. So as we are now living in the fear-based society, या भी एक सोसाइटी में ऐसे में जी रहे हैं जहाँ हर समय किसी ना किसी का डर हमेशा हमें लगा हुआ है.
And it's also not only fear-based society, it's also discrimination-based society. खाली वही नहीं, और इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है बड़ी बड़ी फील्ड्स को लेकर. So, and it's a result of hatred, greed, and delusion, which is the cause of all sufferings. या ये जो जलन है, Greed, लालच है, hatred, greed, and delusion. और डिल्यूजन्स है. डिल्यूजन, ग्रीड, जलन, ये सारा जो असली दुखों का कारण है, ये भी इस संसार में बहुत है. हम इसके साथ भी हम जी रहे हैं. So the answer and the only solution to heal the world is to heal ourselves first. जैसा कि वेनेबल वज्रा मेथिनी जी ने भी ये कहा था कि अगर इस चीज़ों से हम बाहर आना चाहते हैं, वर्ल्ड को हील करना चाहते हैं, कि हम ये चेंज बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलना होगा, खुद को हील करना होगा. Yeah, and so we should accept the true nature with the Buddha's lens and living in alignment. तो अगर ऐसा करना है तो जो इस संसार का सच्चा नेचर है कि हमें एक अलाइनमेंट के साथ, एक बड़े अच्छे डिसिप्लिन के साथ, एक सही तरीके से जीवन को जीना होगा, जैसा कि बुद्ध ने कहा. So today I'm very happy to represent the Buddhists in Thailand to come to this event. मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं थाई बुद्धिस्ट लोगों को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बहुत सारे थाई बुद्धिस्ट जो है आप सभी के बीच में इस कॉन्फ्रेंस में आए. And I'm most impressed with the two famous quotes of Dr. Ambedkar. और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, दो बड़े फेमस कोट हैं डॉक्टर अम्बेडकर के. I was born from a Hindu family but will die as a Buddhist. मैं पहला कोट जिन्हें अच्छा लगा कि आई वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली बट आई विल डाई एज अ बुद्धिस्ट. Anyone impressed? Okay. And there's another famous quote. If there's any name which is spoken outside of India, famous and said with reverence, it will not be the name of Lord Rama or Lord Krishna, but it will be the name only the Lord Buddha. I think you repeat it again. Maybe. Okay. If there's any name which is spoken outside of India around the world that is famous and said with great respect, is not the name of Lord Rama or Krishna, but it will be the name of Lord Buddha. Okay, जो मान्यता जो गर्व से वो आगे जाके पूरे संसार में जिस भगवान की बात करेंगे वो हमेशा भगवान बुद्ध का ही नाम लेंगे. Okay, so as we have said earlier that Buddhism is not about quantity but it's about quality. बुद्धिज्म क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की बात नहीं करता. All right. So there has been one light happening 2,600 years ago, and that was the light of Lord Buddha. एक लाइट चमकी थी आज से 2600 साल पहले, और जो लाइट थी वो भगवान बुद्ध की वो लाइट थी. And another light was ignited 2,300 years ago by the Asoka king or the Dhammaraja. उसके बाद जो दूसरी लाइट चमकी वो 2300 साल पहले थी, वो थी सम्राट अशोक की रोशनी, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया. And another light was ignited here 66 years ago by Dr. Ambedkar. और जो अगली जो एक रोशनी आई थी, एक लाइट आई थी, तीसरी जो थी 66 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने. And today I'm very happy that Mr. Gagan Malik and with all the organizers here and everyone in this room has become another great light in the modern time. और आज मैं बहुत खुशी से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में गगन और आप लोग जो ये सभी हैं, ये आज की लाइट है जो बौद्धमय भारत की बात करती है. And I really commend that after this event there will be 1,000 Buddhist monks, and next year I heard from Mr. Gagan Malik that he would like at least 1 million Indian people to become Buddhists. So big hand to Mr. Gagan Malik. जिन्होंने कहा कि धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन इस साल 14 अक्टूबर को औरंगाबाद में 1000 लोगों का एक इवेंट है जहां जो बुद्धिस्ट बन रहे हैं. और मैं गगन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि बाबा साहब को रिस्पेक्ट करते हुए 14 अक्टूबर 2023 में हम एक और परिवर्तन करेंगे जिसमें 5 लाख से ऊपर लोगों को बुद्धिस्ट हम बनाएंगे. And so I would like to conclude that Buddha was born in order to reform not only the society. The Buddha was born
to reform human beings from getting out of a samsara. बुद्ध जब थे, बुद्ध ने एक सबसे सही चीज़ ये बताई कि इस संसार से निकलकर, ये दुखों से खत्म होकर निर्वाण की प्राप्ति कैसे करनी है, ये मार्ग बुद्ध ने हमें दिखाया था. ये बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ. And I understand that is also the mission of Dr. Ambedkar, not only to reform the Indian society, getting out of the caste system, but for us human beings to get out of this world, being born again. हाँ, जो मैंने जैसा बाबा साहब के बारे में पढ़ा, खाली बदलाव लाना ही उनका एम नहीं था. जो उन्होंने क्वालिटी सबको लाई, वो भी ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम सभी वो को मार्ग को जाने, जिससे हम सभी को निर्वाण की प्राप्ति हो. So this is the game changer. You know the game changer. They have turned a page in history by turning the Dhamma wheels, and now I really appreciate and being so honored to be here to see that you all gather here today with the vision, with the leadership of Mr. Gagan Malik to turn a page of history in India. मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ये सारी चीज़ें की गई हैं और आज गगन के साथ आप सब लोग जुड़े हैं और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में एक और हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी. Yeah. So I would like everyone in this room to sadhu 3 times for Mr. Gagan Malik, for everyone in this room and all the organizers involved. सभी को एक बार फिर से 3 दफ़ा साधुवाद देता हूँ गगन को और आप सभी को जो इस पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Denai. May I now get Master Michael Lee to kindly speak few words with us. Hello. Namaste, everyone. Thank you, everyone. It's an honor to be here, invited by Gagan Malik, and sit with all the brothers and sisters here. ये माइकल ली हैं जो कि जर्मनी से हैं, फेंगशुई मास्टर हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया हमने. उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया करते हैं. Okay, it's a very long trip from Germany to India, and I'm feeling very blessed and thankful to be here with my mom. She's sitting right there. जर्मनी से इंडिया का जो यात्रा है काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये यात्रा करके यहाँ पर आया हूँ अपनी माँ के साथ, जो कि थीन क्वांग यहाँ पर हैं, जिनकी माता जी हैं, दोनों जर्मनी से आए हैं. Buddhism is one of the 4 major religions in the world today. We can think of Buddhism in terms of 3 main categories: philosophy, science, and religion. Sorry, can you repeat it, please? Yes. Buddhism is one of the 4 major religions in the world today. हाँ, बुद्धिज्म 4 मेन रिलीजन्स में से एक रिलीजन है आज वर्ल्ड में. And we can think of Buddhism in terms of 3 main categories. और बुद्धिज्म को हम 3 मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं: philosophy, science, and religion. फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन, ये 3 कैटेगरीज आती हैं बुद्धिज्म में. Yeah. The 4 noble truths contain the essence of the Buddha's teachings. 4 नोबल जो 4 सत्य हैं, वो जो एसेंस है बुद्धा की टीचिंग्स में के वो दर्शाते हैं. It was these 4 principles that the Buddha came to understand during his meditation under the Bodhi tree. ये जो 4 जो सत्य हैं जीवन के, नोबल ट्रूथ जो 4 हैं, ये उन्होंने प्राप्त किए अपनी तपस्या से जब वो मेडिटेशन कर रहे थे. Today, in this scientific and technologically developed global world, for easy living and pleasure, people are still both physically and mentally not satisfied and still didn't find peace. आज की इस मॉडर्न दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर भी
इतना कुछ होते हुए भी, इतनी टेक्निकल चीज़ें, मशीनरी होते हुए भी लोग खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हर तरीके से या किसी ना किसी तरीके से पीड़ित हैं. Buddhism offers few very simple and very effective methods to combat that. लेकिन बुद्धिज़्म जो धम्म है वो बहुत अच्छे बड़े सरल तरीके से ये बताता है कि आप इन दुखों से दूर कैसे हो सकते हैं. To be honest, I've never been to India. This is my first time. So standing here, I think there's a reason. मैं आज तक भारत में नहीं आया, आज पहली बार भारत में आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है जो मैं आज सबके बीच में हूँ. I think there is no coincidence. I believe in cause and condition. Can repeat? Okay. Like Lord Buddha said, there is no coincidence that we all gather together here. There is some कुछ भी reason. कोइंसिडेंसली नहीं होता कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. The condition first has to be right, like after COVID, and now it's possible to gather together, and the cause of having the opportunity to be here actually in person. आज कंडीशन बदल गए हैं, कोविड ख़त्म हो गया है और पूरा हमें मौका मिला कि एकत्रित होने का और ये कॉन्फ्रेंस करने का. In other words, so it's like having the seed and the soil. अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि भैया ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है कि सीड भी है और सॉइल भी है, तो उसका एक मिश्रण है. So no matter how futile the soil is, without the right seed, nothing grows. सॉइल कितना भी अच्छा हो, अगर सही सीड उसके साथ नहीं है, बीज सही नहीं है, तो काम जो उसका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा. So this will give us just an idea what Lord Buddha says implies not only 25,000 years ago, but to every people living today. ये जो बुद्ध ने एक बात उस समय कही है, चाहे वो 2600 साल पहले की बात हो या आज की हो, ये आज भी इम्प्लाई उसी तरीके से ही होती है. अच्छी मिट्टी और अच्छा बीज, जब तक अच्छा मिश्रण नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. So let's talk about money, for example. Let's say if a person have bad karma from the past and the economic conditions are not good. We bring two things together and the person has poverty, the person has financial problems. पैसे की बात करें, अगर पैसा नहीं है या प्रॉब्लम्स उससे आ जाती हैं या पॉवर्टी आती है तो उससे उसको प्रॉब्लम्स उसकी शुरू हो जाती हैं. So on the other hand, we have a person with good karmic seeds and bad economic conditions. Well, it's not ripe, so he will be fine. Because there could be the soil, but there's no ripe seed. एक तरफ ऐसा आदमी है, चाहे उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले फ्यूचर में वो समय उसका सही आ जाएगा. So even if we have a good economic condition and the person with the bad karma seeds, there will not very much will happen. अगर आपके पास आज पैसा है लेकिन आपके कर्म खराब हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ सकता. So this will give us the idea that the law of karma will go either way. ये एक लॉ ऑफ कर्मा है जो एक तरीके से चलता है. It's like if you win in the lottery and even if you move to the other country or states, you own that money. And you can it's also that you can create some debts and you will take it with you. Technically. अगर आप लॉटरी एक जीत जाते हो, कहीं घूमते हो, आते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो आपको पैसा मिला है आपको उसको वापस करना है, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी कर्म से इस जन्म में या अगले जन्म में वो आपको वापस लौटाना ही होगा. ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये लॉ ऑफ कर्मा है. But as Lord Buddha said, the law of karma can help you create and navigate your future. बुद्धा ने कहा है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है आपको, अगर आपके कर्म सही हैं तो एक आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं. So what does it mean? It means the seed can influence the soil. In other words, a person with tremendous good karma can to a certain amount influence and change the condition of the surrounding he is in.
यही उन्होंने कहा है, ये लॉ ऑफ कर्मा है कि अगर मिट्टी अच्छी है तो हमें अगर सीड उसमें अगर हमने अच्छे डाल दिए तो उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा ही होगा, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी. So here the golden rules come in. There's a positive golden rule and a negative golden rule. दो रूल्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव गोल्डन रूल और एक नेगेटिव गोल्डन रूल, ये बताने जा रहे हैं. The positive golden rule is do things to others as you want those things done to you. Can you repeat the first one? The positive golden rule is do things to others as you want those things done to you. पहला गोल्डन रूल ये है कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार या ऐसी चीज़ें करिए जो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ होना चाहिए, तो लोगों के साथ वैसा व्यवहार शुरू कर दीजिए. The negative golden rule is don't do things to others as you don't want those things done to you. दूसरों के साथ कभी भी वो चीज़ मत करिए जो आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ हो. ये दूसरा गोल्डन रूल है. ये दो गोल्डन रूल आप हमेशा अपने दिमाग में, जहन में रखिए. The last one was taught in the old tradition. You should not steal, you should not kill, you should not lie. And by living by the teachings of Buddha, we have the technology of using the law of karma to prevent generating the bad karma. पंचशील का पालन करना चाहिए, ये बुद्ध की टीचिंग्स ने कहा है, और अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जितने खराब कर्म करेंगे वो एक और आपके जीवन के उसमें जुड़ता चला जाता है, और जो वो साइकिल है कर्मा की वो कभी खत्म नहीं होगी. And the positive golden rule is a technique actually on how to get what you want. एक पॉजिटिव टेक्निक है, यही है कि जिस पे चलकर आपको जो चाहिए जीवन में, जैसी चीज़ चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे. So if you spread the teachings and live by that, you will help others in need and thus get the good karmic seeds. अगर आप टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, आपके अच्छे कर्म होंगे, तो आपका जीवन और सुखमय होगा. So if you want to be loved, you should show love to people. और आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, तो आपको लोगों के प्रति भी प्यार शो करना होगा. For example, you can just sit there and be quiet and not talk to anyone, expecting others to come to you. I mean, sure it can happen, but the chances are more higher if you go out and talk to people, care about people, so there will be replication. या तो आप चुपचाप बैठ जाएं कि कहीं कुछ हो रहा है, आप कुछ ना करें तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तो आपको उठना होगा, लोगों को प्यार करना होगा, लोगों का ध्यान रखना होगा, जिसके रिजल्ट में आपको वापसी में प्यार मिलेगा और आपका जीवन सुखमय होगा. It's the same with prosperity. You heard it so many times, but for some of us, or for some reasons, for a lot of us, it doesn't sink in. Okay, it's the same with prosperity. You heard it so many times, but for some reasons, for a lot of us, it doesn't get in the head. बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं कि ऐसे करना है या ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन हमें अगर हम अपनी दिमाग में एकाग्रता लाएंगे तो आपका जीवन भी प्रॉस्पेरिटी से भर जाएगा, सुखमय हो जाएगा. So in order for your life to change, you have to plant a good seed. अपना जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो आपको सही बीज बोने पड़ेंगे. By supporting others, for example, supporting the institutions like from Gagan Malik, Mr. Gagan Malik. अच्छे बीज बोने का मतलब है आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरी जगहों को सही काम जो कर रहे हैं उनके साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छे मेरिट्स प्राप्त होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे. So by stealing, for example, although the person is not aware that there will be his loss, there will be a directly karmic record. Sorry, can you repeat again? So by stealing, although the person who got those things stolen is not aware of it, but there will be directly a karmic record. या अगर किसी की चोरी होती है या कोई चोरी करता है तो कहीं ना कहीं वो कर्मों में नहीं जुड़ा, वो आपके कर्मों में जुड़ जाएगा. I think we have to wrap up also, so we have to shorten up the speech. People are getting here. So yes, so
last but not least, so when you're giving money to charity, when you do donations, it will come back to you many, many times. जब आप लोगों की मदद करते हैं या चैरिटी करते हैं तो वो कई गुना बढ़कर आपके जीवन में वापस आता है. So knowing that, why not planting a good seed so you and your loved ones can have a good future? Okay. एक अच्छे बीज बोते हैं ताकि आप और आपसे प्यार करने वाले सबका जीवन बहुत सुखमय हो और अच्छा हो. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you, Master Lee. I have to rush to wind up the program, but before doing that, I have two proceedings to quickly finish before I come to the chairman's speech. Moving ahead, I am pleased to announce that Gagan Malik Foundation has started its own YouTube channel, the inauguration of which the Foundation Express should be done on this occasion. I request the chairperson and all the guests to kindly inaugurate the YouTube channel of Gagan Malik Foundation. Mr. Gagan Malik, kindly lead the guests. Shall we move on? Yeah. So we consider that the YouTube channel has been inaugurated. Thank you. There have been various work of academic importance published by some of the participants of this conference, some of which are set for release in today's program. I request the chairman and our honorable guests to kindly release those books. I will call out the names. There are two books, Lifelong Learning and Life Skills for Adult and Teachers Education. These are the books which have been authored by Dr. Rajeshri Meshram. I request all the dignitaries to kindly release those books. I request the dignitaries to please release the books of the authors. The next book is by Dr. Manisha Wakde. The title of this book is Bauddha Nikayo Ka Itihas. The next book is Bauddha Nikayo Ka Itihas by Dr. Manisha Wakde. The next book is authored by Professor Praveen Kamble. The title of the book is Poet, the Buddha. Poet, the Buddha, authored by Professor Praveen Kamble. I request the dignitaries to kindly release the books. Next, we have two books authored by Dr. Vandana Ingle. One is on value and environment education, and another curriculum design in physical education. I request the dignitaries to kindly release those books.
Value and Environment Education and Curriculum Design in Physical Education. These are the books authored by Dr. Vandana Ingle, been released by the dignitaries. The last book that is to be released is by Dr. Lalita Punaya. The book is titled Health Education and Sports Nutrition. I request the dignitaries again to kindly release this book. I very heartily thank the chairperson and all the dignitaries for doing the honors. Thank you once again. Now we move on to the last lap of the program. We have now Dr. Subhash Chaudhary, Honorable Vice Chancellor of Rashtrapati Tukaroji Maharaj, Nagpur University, to deliver the chairman's remark. Dr. Subhash Chaudhary, sir, adorns the position of Vice Chancellor to a 100-year-old prestigious university catering to nearly 4 lakh students of the 4 districts of this region, of which we are celebrating this year as a centenary year. He is trained as a civil engineer and specialized in structural engineering. He also has management degrees to his credit. Till now, he has had a long cherished working experience of 34 years, including both in teaching and research as well as administration. Before he becoming the Vice Chancellor of Nagpur University, he was and has been successfully been the principal of 3 prestigious colleges and has also worked as a Pro-Vice Chancellor within the very same university. He has been continuously engaged in guiding doctoral research, undertaken projects, published research papers, and delivered talks at various occasions, both nationally and internationally. We are grateful to have him today to chair this inaugural session on such an auspicious moment. I invite him now to provide his chairman's remarks on this occasion. Already come. I pay my homage to Tathagat Gautam Buddha, dignitaries on the dais and off the dais, all monks, the learned monks, and my dear friends. I would not take much time because we are running out of time now. Our schedule is disturbed. I will wind up because in presidential speech I have to conclude. And I don't want to put the translator again. So I will start myself to speak in Hindi. भाषण से राशन के सामने भाषण देना उचित नहीं है. I am odd man out really because आप सभी यहाँ बुद्धिज़्म जानने वाले, मानने वाले और अडॉप्ट करने वाले लोग हैं. और बुद्धिज़्म पे मैं ज़्यादा बोलने का मेरा अधिकार भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम जानता हूँ. लेकिन जितना भी मैंने अभ्यास किया हो, देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी या जिसको हम कहेंगे कि प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ऐसे अलग अलग आयाम हैं. एंड बुद्धिज़्म इज़ बेस्ड ऑन कर्म योगा. इसलिए भगवान गौतम बुद्ध को महान कर्मयोगी कहा जाता है. और कहते हैं ना कि हमने अपने ही हाथ से अपनी किस्मत बनानी है, और यही कर्मयोग का सिद्धांत है. अभी हम इसके पहले जिन्होंने कुछ बातें कही कि लॉ ऑफ कर्मा, और वो रियली इट इज़ द नेचुरल वन, जो नैसर्गिक रूप से हम अडॉप्ट कर सकते, पाल सकते हैं और हम रह सकते हैं. बड़ी खुशी के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं. और इतना सिंपल और इतना अडॉप्टेबल धर्म अगर
माना जाए तो ये बुद्ध धर्म है। कहा जाता है कि मतलब ये सच्चाई है कि बुद्ध धर्म इंडिया से ही आया। गौतम बुद्ध भी इंडिया से थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो भी इंडिया से थे। और बड़े गर्व की बात है इंडिया के लिए कि बुद्ध धर्म इंडिया के बाहर भी बिना किसी प्रभाव से, बिना किसी प्रेशर से ये अडॉप्ट किया गया है विदेशों ने। ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया का एक धर्म भी बाहर के कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया गया है। और इसीलिए ऐसे जो बुद्धिज़्म कंसेप्ट पे जो आज का सेमिनार है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं बधाई देता हूँ गगन फाउंडेशन को कि इन्होंने इतना अच्छा मौका यहाँ उपलब्ध किया नागपुर भूमि में, जहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। और मैं बधाई देता हूँ माननीय डॉक्टर पूरमचंद मेश्राम जी को कि जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को लाने में काफ़ी प्रयास किया। और नागपुर शहर में और हम इस बात कि मुझे जिस बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष पद के लिए यहाँ रखा गया है, हालांकि मुझे उसका कारण ही नहीं समझा, जबकि जितने महान व्यक्ति यहाँ थे इसमें मेरा रोल बहुत छोटा है। सो मैं इसी धन्यता के साथ यहाँ अपने विराम देता हूँ, क्योंकि समय को देखते हुए मेरे पास तो बहुत लंबी भाषण था, पर वो छोड़ के मैं यहीं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for being so thoughtful. I formally thank Dr. Subhash Chaudhary, sir, for gracing not just this occasion, but also summing up the inaugural program with his thoughtful remarks. Thank you once again, sir. Now I call upon Dr. Rajashri Meshram to formally propose a vote of thanks for this inaugural session. Okay, there is an insistence from Mr. Gagan that there is one speaker which has been left out, Dr. Vuttichai Vorasing. So kindly he can enlighten us with some of his thoughts. นมัสการท่านวอท่านอารยันหลวงปู่พระคุณเจ้าทุกๆลูก Good afternoon, ladies and gentlemen. I keep my time. I was asked to keep only 5 minutes, but actually, I was told 2 minutes. But never mind. I give you the time. You have been told, and a lot of people told you many things, but for me, equality. When we were born on this earth and this dimension, we are all equal because we are controlled by time and space. And to escape, for example, from space, we have to practice. As Gagan said always when he was a monk, be Buddhist by practice. And that's very true. So equality, we are all equal for me because time and space control everything. And also for freedom, for liberty, I think Buddhism has taught us many things about worldly greed, how to escape and be away from worldly greed, and also carnal desires, silly angers, and also especially from our own ignorance. And it's very important because if we are not free, ourselves are not free, we cannot deliberate anybody else. And lastly, for brotherhood or fraternity, I think I have been confirmed today when I came to this meeting. I feel very humble and honored, and I have to thank Gagan Malik for making things happen. And for him, I was somehow connected to him. He's like my spiritual younger brother. So we plan
to do something to promote Buddhism in India, not only bringing in Buddha statues, but we also have special program, and this program we will launch hopefully next year in January. We have Thamayatra, we have 100 monks, Thai monks selected to come here to walk from Prabhani until Mumbai. So we are expecting to do things like that. So thanks again for Gagan Malik for his being a Buddhist, for a monk, and also for his foundation. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, sir. I would now like Dr. Rajeshri Meshram to kindly propose a formal vote of thanks for the inaugural function. Good afternoon and a warm welcome to all the respected dignitaries. We are in the last segment of inaugural function. Myself, Dr. Rajeshri Meshram, would like to express my gratitude to all the distinguished dignitaries on the dais and off the dais. I consider this occasion as an honor and privilege to extend the vote of thanks. At the outset, on behalf of the organizing committee, Honorable Chief Guest, Venerable Fra Mehdi Waji Rodo, Abbot of Chön Tavan International Meditation Center, Chiang Rai, Thailand. In his inaugural address, Sir has highlighted on Buddhism, equality, humanity, and democracy. I thank you, sir, for sparing valuable time to enlighten today's august gathering. In this conference, we are blessed with your presence. I extend my thanks to Honorable Dr. Pongsang Tangkana, President of Giving Mind Nirvana Soul Foundation, Thailand, a spiritual speaker. We had heard him earlier, for your candid presence and motivational words through your keynote address. Sir, indeed, your words have inspired the august gathering present here. Thanks a lot, sir. We are grateful and blessed with your kind presence. We are honored to have with us Chairperson Dr. Subhash Chaudhary, sir, Honorable Vice Chancellor, Rashtrasanta Tukdoji Maharaj, Nagpur University, who graced us with his kind support, presence, and guidance. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. We are fortunate to have with us respected Dr. Prashant Narnore, sir. Sir is a Commissioner of Social Welfare, Maharashtra State. I would like to thank you, sir, for taking your precious time out and consenting to be the guest of honor. Sir, indeed, your words were really inspiring in context with the society. Thanks for your presence from the bottom of the heart. I'm extremely happy and delighted to note the gracious presence of a well-known global actor from the cine world, respected Mr. Gagan Malik, sir. Sir is a president of Gagan Malik Foundation. We are grateful for his wishful academic and social bent of mind, by virtue of which we all have seen this program, The Day of Light. Thank you, sir, for your full support, cooperation to make this conference a big success. I extend my thanks to respected Dr. Puran Chandra Meshram, former Registrar of Nagpur University and patron of this conference, under whose able leadership and guidance the conference is being nurtured and a huge success in spite of your health issues. I want to express my revered appreciation and gratitude to all the distinguished dignitaries sitting on the dais. Our guest Danai Chanchau Chai, President Do D Foundation, Thailand, Ms. Patrachi Pimol Young Prafakon, Honorary Counsel of the Republic Code D.I.O. in Thailand, Master Michael Lee,
Feng Shui Master, Acupuncture Specialist, Germany. Respected Acting Captain Natakit Chai Chaler, Monk Hon, Committee Member of Wat Thatong, the Royal Monastery from Thailand. Respected Dr. Vuti Chai Vora Singh, Vice President of MSEEDS, Foundation for Leadership and Development Sustainability from Thailand. I am also thankful to our respected invitee, Mr. Prashant Dhingre, Social Worker, Nagpur, Mr. Suresh Gaikwad, President Hirabai Bahu Uddeshya Shikshan Sanstha, Nagpur, respected Mr. Nitin Gajbie, Coordinator Gagan Malik Foundation, Nagpur, for their presence. I am also thankful to respected statutory officials, heads of the department, faculty members, delegates, various committee coordinators, conveners, to name a few, Ms. Smita Vakde, Dr. Neeraj Bodhi, Head of the Department of Pali and Prakrit and Center for Buddhist Studies, Dr. Rubina Ansari, Principal, College of Social Work, Kamptee, Honorable Ajan Prashil Gautam Sir, President Sangakaya Foundation, Dr. Vandana Ingde, President Matoshri Anjana Bai Bahu Uddeshya Mahila Vikas Mandal, Nagpur, and Mr. Suresh Gaikwad. I also thanks to Dr. Anil Hirekan, Registrar, Gondwana University, Professor C.D. Nayak, and Professor Gajbia Sir. I also thank to Sangamitra Doke ma'am. Now I thank you all the members of the organizing committee, without which it was not impossible to conduct this function. Dr. Om Prakash Chimankar, Dr. Dharmesh Dhavankar, Dr. Vikas Zambudkar, Dr. Yashwant Patil, Dr. Milind Sathe, Dr. Shalini Leeth ma'am, Dr. Shalendra Lende, Dr. Praveen Joshi, Dr. Pradna Madam, Pradna Bagde Madam, Dr. Pranali Khobragade, Dr. Lalita Punaya, Dr. Shrikant Bhute, Dr. Shashikant Jambudkar, Dr. Nitin Dongarwar, Dr. Manisha Hirekan, Dr. Swarna Lata Varke ma'am, Dr. Naneshwar Khadse, Dr. Nishant Mate, Dr. Rita Shevare, Dr. Bipacha Ghoshal, Dr. Suresh Gaikwad, Dr. Jayant Kumar Ramteke, Dr. Seema Hirekhan, and there are a lot more. I have to skip some of them. They wholeheartedly, this team has taken their pain to complete this task and coordination for today's program. I thank you all. I'm very much thankful to our respected delegates from all over the world, more than 300 foreign representatives and more than 1,000 delegates registered their names for today's conference. This is really a huge success in itself. I thank you to the distinguished members for revealing the 7 books. I thank you, Dr. Vikas Jambudkar, for comparing this inaugural function continuous and flawlessly. Last but not the least, those who have directly or indirectly contributed to the conference. I'm thankful to Gagan Malik Foundation, conveners, various committee members and social media, also respected journalists, technical team, university officials for timely support for making necessary arrangement to make this program successful. Thank you very much for your patience listening. Now I will take your leave. Namo Buddhaya. Thank you, Mishra Madam. Now I declare this inaugural program as over. But before that, there is one announcement to make. All those people who would like to have the books of Colonel Dr. Ponsek Tangakana, he has put up his stall over there and you can have those books from him. But he has a warning, only those people who would wish to read his book, only those people should go get those books. The first technical session of this conference will